So guys, we are live and I think it's a good time to start. So let me formally welcome all of you. Very good afternoon to all of you on behalf of Foundation of Tax and Accounting Professionals. Hope I am audible to all of you. Am I audible, Nitin ji, Gaurav ji? So my name is Gaurav Garg. I am moderator for today's session, and I have with me none other than CA Nitin Kanwarji and advocate come CA come Dr. Gaurav Gupta ji. Nitin ji, both my speakers do not need any introduction, but I will take few seconds to introduce both of them. I think that would be sufficient. Nitin bhai was a regional council colleague for 2 terms, and I was lucky enough to invest my 1 term with him. He has held various posts in the regional council, and he's quite well-known speaker and quite active speaker in the field of tax, specifically in northern region, and very well known in the field of tax in entire India. On other side, we have advocate come CA Gaurav Gupta ji, who is a very dear friend and who has recently started practicing in High Court in the matter of tax, whether it's GST or income tax. So one day we were walking and we go for a walk together, and Gaurav bhai was discussing about this apex court judgment. So I thought it would be a great combo to have Nitin ji and Gaurav Gupta ji with us, and to make all of us understand about the significance of these judgments. So with this small introduction, let me start, as a moderator and as someone who has not gone through the judgment. So Nitin bhai, you have got a tough task to first make us understand about the brief facts of the judgment and what the apex court said on it. And then, we will keep on taking the view of Gaurav bhai wherever required. Wherever Gaurav bhai you want to, what do you say in court, injunction? Wherever you want to add value or wherever you want to make a point, feel free to do that. So starting with Nitin bhai. Nitin bhai, over to you. Thanks a lot, Gaurav. और जैसे अभी गौरव भैया ने बताया ना कि जब उनको लगा कि नितिन आ रहा है या गौरव हिमसेल्फ इज देयर, गौरव इज देयर, तो लगा कि यार ये प्रोग्राम करना चाहिए. सो डू आई. मेरे को लगा जब गौरव ने बुलाया कि नितिन तेरी तैयारी हो गई, मैंने कहा पढ़ना थोड़ा शुरू किया. यार 149 पेज की जजमेंट है. ही टॉक अबाउट 2 जजमेंट्स, पर मेरा प्राइमरी कंसर्न ऑफ जो 149 पेज की जजमेंट है इन द केस ऑफ अहमदाबाद, जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मेरा मेन फोकस उस पे रहेगा, राइट. एंड एनी अदर क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड फॉर दिस थिंग, अदर केस वी कैन डिस्कस इन दैट लेंथ आल्सो. एंड एज फार एज Gaurav Garg is concerned, yes, though everybody knows that he was my council colleague और currently अभी NIRC member है, और बहुत कम लोगों को पता है. He is also my guru also. He already teaches me how to read the law. और मैं इसमें अतिशोक्ति वाली बात नहीं कहता. ये दोनों गौरव अपने आप में ना एक अथाह सागर है. एक अगर मुझे आज भी ध्यान है कि जब गौरव भैया ने जब इंटरनेशन में जब पढ़ना शुरू किया था, he is the person who teaches us कि इंटरनेशन कहते कैसे हैं, किस चिड़िया का नाम है, तब मुझे पता भी नहीं था 2013 में. And as far as Gaurav Gupta is concerned, everybody knows that he's a learned speaker on GST. और वो उनकी हमेशा मैं पीपीटी में कहता था वो चाबी जो जरूर नजर आती थी. आप चाबी जरूर होते थे, हर की चाबी. आप पहले वो इशू निकालते थे, फिर बोलते थे इसकी चाबी है. तो एंड ऑफ द डे मुझे समझ में आ गया था चाबी का मतलब ये है. अगर ये पीपीटी में किसी में चाबी नहीं लेके आते तो मुझे लगता था आप ये प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपको सॉल्यूशन इस बार नहीं देंगे. तो दैट्स इट. मतलब आई जस्ट making a fun of it. That's all. और कुछ मजाक वाली बात कर रहा हूँ. Anyhow, let us come to the topic first. I believe कितने लोगों ने जजमेंट पढ़ ली है, मतलब मोटा. आई नो गौरव भैया ने पढ़ ली होगी, गौरव जी ने पढ़ ली होगी. बाकी लोगों में से किसने हाथ खड़ा करने में, यस नो करने में कोई दिक्कत नहीं है, आई बिलीव. और यहाँ पे कोई सीपीआर लग नहीं रहे हैं, चिंता ना करें. और ना गौरव भैया NIRC मेंबर करके बोलेंगे यार ये सेमिनार सुनने तो आया था, कोई जजमेंट नहीं पढ़ी थी, तो कि यस नो करने में कोई दिक्कत नहीं. जी राजीव जी, आपने जजमेंट पढ़ी है नहीं पढ़ी ये बता दे, बस यस नो कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मुझे फ्लेयर पता लग जाएगा कितना कवर करना है, कितना. यस अंकित जी से यस. बाकी लोग क्या कह रहे हैं? ओनली अंकित जी ने यस बोला, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? एनीहाउ, आई बिलीव, चलो, वी रिस्पेक्ट द स्पीकर इन इंग्लिश. From South India, we are watching the. So, see, I'm primarily from North India, so I'll try to speak in as more as in English. पर मेरी ना देखो क्या होता है, हिंदी भाषी में ज्यादा हूँ, राइट.
ऐसा नहीं है मैं इंग्लिश में बोल नहीं सकता, तो ओनली थिंग इज जब आप बोलना चाहते हो तो आपके वर्ड्स जो अच्छे निकलने जाते हैं और जो आप समझाना चाहते हो वो समझ में तभी आता है व्हेन यू स्पीक, ट्राई टू स्पीक also. Being an Indian, I always try to appreciate that one should understand Hindi all as well. I will try to speak as much as in English also, right? Nitin Now, bhai, sir, my request is, and keeping in mind that we have diverse viewers from across the country, right, sir. you may use the language which is convenient to you, but please ensure that the key points or the key facts which you are delivering, you also deliver the same in English. That's all. Perfect, perfect. And Perfect, sir, perfect. to my viewers, who have joined us from different part of the country, wherever Nitin ji is speaking in Hindi, kindly take a pause and wait for his English translation. I'm sure he will going to convey his points in English as well. Thank you. Nitin bhai, over to you. Thank you, thank you. Gaurav bhaiya, एक बात और in between, what I will do, I've actually divided my subject, जो 149 page का judgment है, I will divided that subject in different tranches. So what I'm supposed to do is that while I complete one tranche, I will tell what are the issues in that और कैसे पढ़ना है, मेरा what is my interpretation, what is my view on that interpretation. In that after that or in between also, क्योंकि Gaurav Gupta is supposed to इंटरवीन इन दैट कि कोई चीज मेरे को लगे कि उनका इंटरप्रिटेशन अलग है या मेरा इंटरप्रिटेशन में कोई गलती है, अप्रिशिएट करें. नोबडी इज एक्चुअली पोजिंग एनी इशू कि आपका इंटरप्रिटेशन गलत है या फिर मेरा इंटरप्रिटेशन सही है. अप्रिशिएट करें कि कभी भी कोई जजमेंट पढ़ा जाता है तो जजमेंट का पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग है, राइट? तो नितिन जी, आई थिंक इंटरप्रिटेशन की तो यहाँ पे किसी को डर ही नहीं है. रीजन बीइंग सबके इंटरप्रिटेशन इस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने चेंज कर दी. एकदम परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट. So I think we are reworking on our basic concepts today after going through this journey. और भैया, I always believe आपकी बात सही है, पर कई चीजें ऐसी होती हैं जो मैंने और आपके सोचने के ढंग में फर्क जरूर डाला है, पर सुप्रीम कोर्ट के बोलने का स्टाइल शायद डिफरेंट हो सकता है. पॉसिबिलिटी है, जैसे I will go through some judgments also that which say that though they are concurring with the views of High Court, but they said the ratio laid down by the High Court is not acceptable. तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं, तो we have to go about that also, right? Now, sir, allow me to start my PPT. गौरव भैया, PPT एक बार रन करने के लिए मुझे बोल देंगे, अलाउ कर देंगे गौरव जी? गौरव जी, करो. Give me time. Just doing. Anyhow. Good to go, Nitin bhai. Sajid, thank you. ये PPT is दिख रही है आपको? सबको नजर आ रही है? Visible. Thank you. Now, the topic is recording the Eastern Apex judgment on charitable trust and its impact thereof in various type of organization, right? अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सी what are the organization which has been impacted, or take my words, it is each and every type of organization which has been impacted by the court of judgment, right? Now, before I start, let me give one caveat that see, I'm not the one who is going to comment on the decision, but one can make his own assessment. Whatever we are discussing today, the reasons, rational consequences of the cases and solution to the queries posed. और target क्या है कि what are the lessons learned from them? That is the key. Target यही है, sir. और we are not criticizing anything. We are not saying that judge should have said this thing. Judge को ये कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था. There are honorable judges of the Supreme Court, and they are much wiser than us. So what is the target of this particular webinar is to become more wiser, so that जो जितना आज तक हमने पढ़ा है, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, उससे ज्यादा बेटर ऑफ क्या इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हमें सिखाया. That is the key now. Now, the first judgment name is in the Supreme Court of India, Civil Appellate Jurisdiction, Civil Appeal number 21762 of 2017, in the case of Assistant Commissioner of Income Tax Exemptions, appellant versus Ahmedabad Urban Development Authority, respondent. This case is dated 19th of October 2022. One key thing, please appreciate कीजिएगा सर, मैंने बोला सिविल एपेलेट, तो एक बात और दिमाग में बिठा ले, जो आई बिलीव गौरव भैया तो लगातार डे इन डे आउट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, पर
from other people. मैं 2-3 चीजें आपको समझाना चाहता हूँ before I start go dive deep in this particular judgment. सर हमेशा ना जब आप हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आप हमेशा you always file SLP, स्पेशल लीव पिटीशन. SLP जब एडमिट होती है जाके वो सिविल अपील बनती है. तो व्हाट आई वांट टू से, लेट अस से इफ यू फाइल सम SLP विद सम सुप्रीम कोर्ट बट SLP वाज रिजेक्टेड, so please appreciate कीजिएगा that particular when the SLP was rejected, it will remain the order of high court. वो it never become the judgment of Supreme Court. That particular difference has to be noted down. Now as far as civil appeal is concerned, civil appeal में अच्छा दूसरी बात, एक बात और नोट कर ले, whenever you give when you go for a SLP but Supreme Court has rejected with some reasoning, कोई reasoned order दी है, so that should be considered. That could be considered that what Supreme Court said while rejecting that particular SLP. But when SLP was converted to civil appeal, in that case, whether the Supreme Court has rejected it or accepted it, or if it is rejected with speaking order, without speaking order, it will become the order of Supreme Court. So what I want to say that in that case, the High Court order will merges with Supreme Court order, and the Supreme Court का जो order का जो ratio है या फिर जो decision है या ratio dissenting है, that will become the final. So what I want to say, please appreciate कीजिएगा सर, SLP जब भी रिजेक्ट होती है सर, वो ऑर्डर हमेशा हाई कोर्ट का ही रहता है, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं बनता. वन थिंग मोर विच हैज टू बी नीडेड टू बी नो, वन थिंग कि देयर कुड बी अ केस दैट SLP हैज बीन रिजेक्टेड ऑन ड्यू टू लो टैक्स इफेक्ट. और एक इस पर्टिकुलर केस के अंदर तो क्या हुआ, देयर वाज अ पर्टिकुलर सोसाइटी कॉल्ड बालाजी समिति, इन विच सर appreciate करें that once SLP has been admitted to civil appeal, और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सबको डिस्कस करने के बाद में बोला कि भैया क्योंकि भैया लो टैक्स इफेक्ट था, 10 लाख रुपए से कम का क्वांटम था, इसलिए हम इसको हाई कोर्ट के ऑर्डर को इंटरफेयर नहीं कर रहे. तो व्हाट आई वांट टू से, व्हेन SLP वाज रिजेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ लो टैक्स इफेक्ट, अगर SLP रिजेक्ट होती है, इन दैट केस हाई कोर्ट ऑर्डर रहता है, बट इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं बन जाता, राइट. बट व्हेन सिविल अपील, जब सिविल SLP कन्वर्ट हुई SLP में, जैसे इस केस में हुआ एक पर्टिकुलर सोसाइटी के बदले में, तो ऐसे केस के अंदर अब वो सिविल अपील बन गई, इट विल बिकम अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, बट सुप्रीम कोर्ट ने हैज लेड डाउन सम रेशियोज. इट इज ओनली ड्यू टू लो टैक्स इफेक्ट दे हैव रिजेक्टेड द अपील ऑफ द रेवेन्यू. तो व्हाट आई वांट टू से सर, इन दैट केस वो जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, रेशियो था, वो अब खत्म हो गया, पर क्योंकि लो टैक्स इफेक्ट था इसलिए हाई कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने आगे इंटरफेयर नहीं किया. तो दोनों बातों में फर्क है. तो व्हाट आई वांट टू से दैट हाई कोर्ट ऑर्डर विल ओनली रिमेन ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर एंटिटी ओनली. इन दैट केस फॉर other parties which want to rely on that particular high court judgment, they couldn't rely upon that. Anything you want to add, Gaurav, beyond this? Gaurav ji, could you want to add something? नहीं नितिन जी, I am not intervening in between. Let your flow be there. सर आपको लगे, सर मेरे को लगे. And I am what I'll request is, आप अपने पूरे flow में हो. Don't even look at me. Let's first close at some important discussions, and then we both will enjoy the discussion. Perfect. Now what happened, sir? Sir, ये paragraph 1 है जहाँ पे इन्होंने बोला leave granted in all matters when leave has not been already been granted. Means तो जो पर्टिकुलर बालाजी का जो मैं आपको केस बता रहा था, वहां पे भी सर वहां पे SLP को सर सिविल अपील में कन्वर्ट कर दिया है. नाउ दे सेड दैट जो अहमदाबाद का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो केस था, दैट हैज बीन टेकन एज अ लीड मैटर. व्हाट डज इट मीन? इट इज अ बैच ऑफ केसेस इन विच सर जो अहमदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो केस था वो इन्होंने लीड मैटर माना गया. तो व्हाट आई वांट टू से, व्हेनेवर यू नीड टू नो व्हाट इज द साइटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ओनली. तो व्हाट आई वांट टू से, बाकी सारे केस इसके अंदर डिस्कस हो गए, बट द लीड केस, द लीड नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट विल बी अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ओनली. नाउ appreciate करें when we talk about charities. अच्छा, one thing more which is more to be remembered for this particular case, appreciate करें that in section 11, 12, 13 normally charitable trust and religious trust दोनों के अंदर 11, 12, 13 में आपको exemption मिलती है, right? Read with section 11, read with 12 and 13. But having said that, please appreciate कीजिएगा, this particular judgment is only confined to charitable trust only. So what I want to say, sir,
don't try to read this particular judgment in the context of religious trust. So what I want to say, sir, this particular judgment is only confined to charitable trust only, not to be read in the matter of religious trust. Now, appreciate करें, थोड़ा सा history की बात कर लेते हैं. Let us talk about some history. Everybody knows that since while India was a colony of British. In that case, India is very underdeveloped country. In that case, that Indian income taxes favored charities, even granted preferential treatment in since 1886. So please appreciate कीजिएगा, whenever the country is underdeveloped or developing stage, so sir, government doesn't have so much of resources to actually uplift the social upliftment of the various public, right? Various things. In that case, it is always what normally government used to do. They want to give an exemptions to various NGOs, so that in that case, whatever organization which want to come in front, so that if any which want to work in social upliftment for the relief of the poor or the medical, they want to give exemptions so that taxes will not become their direct cost to them, right? But having said that, you might be knowing that from last so many years, from last 20-25 years, you might be knowing that in the garb of particular charitable or religious trust, there are many people which has actually amassed of enormous wealth, which is not acceptable, or which is not which was not the target of the central government. So what they used to do, the law which by granting exemption to income from religious and charitable trusts has taken effective measure to minimize the misuse of trust funds. As a result, a charitable trust loses tax exemption if certain provisions are not complied with, and if the activities does not fall under section 10 of the Act. Such trust, what they are supposed to do, they have to apply for registration also, and they have to invest and utilize the funds also in the manner laid down under the Act. Secondly, which is very, very important, they have to maintain proper set of accounts, or they have to get it audited also right now. Now, appreciate kare, when I talk about charitable trust, what was the main contention of this particular judgment? Appreciate that read para number 4. It said that in these batch of appeals and special petition, the primary question which falls for consideration is the correct interpretation of the provision to section 2 subclause 15 of the IT Act introduced by amendment with effect from 1/4/2009. So sir, appreciate करें, Finance Act 2008 ने सर एक प्रोविजो ऐड किया था अंडर प्रोविजो 1, और उस प्रोविजो 1 को पहले डाला, फिर उस प्रोविजो 2 डाला गया, प्रोविजो 2 को फिर अमेंड किया गया 2010 या 11 के अंदर, then it has been again amended in 2015. That is bone of contention कि भैया सही मायने में राइट इंटरप्रिटेशन क्या है, अभी डिस्कस करेंगे वो उस प्रोविजो का मतलब क्या है. इट इज नेसेसरी, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किन वो जो प्रोविजो है किस किस पे लगता है, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा. आप अप्रिशिएट करें, जब 215 पढ़ते हैं यू विल कम टू नो दैट नॉर्मली जो सेक्शन 215 है चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो लगता है नॉर्मली 3 काइंड्स ऑफ चैरिटेबल पर्पसेस, मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन एंड रिलीफ टू द पुअर. और बाद में आपको ध्यान होगा इन्होंने ऐड कर दिया था कि भैया अगर आप प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वाटरशेड्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, प्रिजर्वेशन ऑफ मोन्यूमेंट्स कर रहे हैं, और या फिर प्लेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, और बाद में योगा को ऐड कर दिया था. तो प्लीज अप्रिशिएट करें, ये जो 5-6 हैं जो एनुमरेटेड हैं, बी इट एजुकेशन, बी इट मेडिकल रिलीफ, बी इट रिलीफ टू द पुअर, बी इट टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट, और कंजर्वेशन ऑफ मोन्यूमेंट्स और योगा, इनको आप एक बकेट में डाल दें. और प्लीज नोट इट, दिस बकेट कुड बी नेम्ड एज पर से एक्टिविटीज. जो लास्ट है, जो रेजिडुअल क्लॉज है, व्हिच सेज दैट एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी. प्लीज अप्रिशिएट करें, तो यू हैव टू मेक 2 buckets while understanding what is charitable activity. One is per se activity, in which the specific particular activity, be it relief to the poor, be it education, be it medical relief, be it conservation to forest and wildlife, or conservation to monuments or historical places, or yoga, that has to be taken put it in one bucket which could be termed as per se activities, and the other will be residual bucket, which could be termed as GPU, general public utility. So please appreciate कीजिएगा, this provision to section 2 subclause 15, वो जो मैं आपको बता रहा हूं, जो 2008 में अमेंड हुआ था, which has been again amended in
10, then again amended in 2015. This particular provision only hits to GPU only. It never hits to per se activities. So please appreciate कीजिएगा. So our main conundrum, main issue lying on this particular judgment is in relation to GPU only, general public utility, right? Now, appreciate what the Director General of Income Tax, Commissioner, that what they said that कि भैया सही मैंने which they held that High Court के cases के खिलाफ Supreme Court में इन्होंने SLP फाइल की थी, which held that the carrying of any trade, commerce or business is not per se bar or disqualification for GPU category charitable trust to claim be of such, precluding its tax exempt status under the Act. So what I want to say is that there are various High Court cases that relying on various judgments, be it Surat Silk and other judgment, in which they said that कि भैया there is no bar that GPU activity जो कर रहा है या GPU activity कर रहा है वो बिजनेस में काम नहीं कर सकते. The only issue is कि भैया dominant purpose आपको देखना है. Dominant purpose is of charitable activity, they can do business as well. This is the main issue of contention in this particular judgment. Now अप्रिशिएट करें कि आज पूरे जजमेंट्स पे हम कौन से क्वेश्चन पे आंसर देंगे और इस क्वेश्चन में किन क्वेश्चनों पे इन्होंने एक्चुअली डिस्कस किया. मैंने ऑलरेडी आपको समझाया. द प्राइमरी क्वेश्चन व्हिच फॉल्स फॉर कंसिडरेशन इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजन टू सेक्शन 215 ऑफ द आईटी एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2009. 2008 की जो फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट थी उसमें करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है. क्या सेक्शन 11(4)(a) ब्रिंग्स वन मोर बैरियर टू द बिजनेस अलाउड एज पर सेक्शन 215. एप्रिशिएट करें सेक्शन 11(4)(a) बोलता है कि भैया समथिंग व्हिच इज इंसिडेंटल. एप्रिशिएट कीजिएगा, this type of word is missing in provision. So what I want to say, can department say like this कि भैया सेक्शन 11(4)(a) ना केवल आपको सेक्शन 215 की कंडीशन प्रोविजन वाली कंडीशन पूरी करनी है, साथ के साथ आपको 11(4)(a) की कंडीशन ही पूरी करनी है, that it has to be incidental also. So what do you mean by incidental? Now अब further section 10 subclause 46 or elsewhere section 20A or 23 bars the organization to go for exemption under section 11. They said कि मान लीजिए there is a what I want to say, let us say can court or can revenue say like this कि भैया आपके पास स्पेसिफिक सेक्शन है. तो अगर आपके पास स्पेसिफिक सेक्शन है तो ऐसे केस के अंदर अगर आपको स्पेसिफिक एग्जम्पशन के अंदर सेक्शन के अंदर एग्जम्पशन नहीं मिल रही है तो जो सेक्शन 11, 12, 13 है या सेक्शन 215 है वो सही महीने में एक जनरल प्रोविजन हो जाता है. और जब अब ये जनरल प्रोविजन हो जाता है तो ऐसे केस के अंदर आप इसके अंदर जाके एग्जम्पशन नहीं ले सकते. तो व्हाट आई वांट टू से, इफ यू गॉट सम स्पेसिफिक सेक्शन, गो इनटू दैट स्पेसिफिक सेक्शन. इफ दैट स्पेसिफिक सेक्शन could not give you exemption, then you can't come to section 11, 12, 13. This is one of the key condition of revenue also. What then Supreme Court explained it, what can be covered under the definition education का मतलब क्या है. मतलब क्या अगर मैं ऐसे डिस्कस करूं कि आज की डेट में आप जब आज हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज ऑल्सो एजुकेशन. मान लीजिए लेट अस से आप घर पे अपनी मदर से बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो एजुकेशन. तो सही मैंने में एजुकेशन का मतलब क्या है? इज इट समथिंग वेरी वाइडर इन नेचर और समथिंग स्पेशल हैज टू बी, स्पेशल थिंग्स हैज टू बी देयर. नाउ व्हाट डू मीन बाय चैरिटी? अब इस चैरिटी में मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि चैरिटी का मतलब ये है कि डज इट मीन इफ यू गिव समथिंग ऑन इन फ्री दैट इज ओनली अ चैरिटी? पर मान लीजिए इफ यू हैव गॉट समथिंग, आप यू आर गिविंग समथिंग ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस, या फिर इफ यू आर गिविंग समथिंग ऑन अ वेरी मार्जिनल मार्कअप विद अ वेरी मार्जिनल मार्कअप, तो वो क्या वो चैरिटी से बाहर हो जाएगा? या फिर अगर मान लीजिए चैरिटी से वही बाहर होगा जहां पे आपने बहुत ह्यूज प्रॉफिट या फिर अच्छे खासे प्रॉफिट मोटिव पे दिया है. व्हाट डू यू मीन चैरिटी? तो चैरिटी का मतलब क्या है ये हमें समझना है. और प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, जब हम ये समझेंगे इसका पूरा कनेक्शन सेक्शन 2 सबक्लॉज 14 के प्रोविजन से मतलब है. राइट नाउ देन अब जो ओपनिंग वर्ड्स है सेक्शन 2 में, प्लीज नोट करें वो क्या बोलता है, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स. और प्लीज नोट कर ले 1922 के एक्ट के अंदर, इन द 1922 एक्ट, appreciated that this particular line is missing. So what I want to say, when you read section 2 subclause 15 as to what do you by charitable activities, whether this particular line, unless the context otherwise requires, will have some bearing, yes or no. Now the last but not the least, the circular issued by the department, क्या role होता है, what is the role?
and whether it is binding or non-binding in nature, right? These are the key questions which are actually मैंने sorry 149 पेज का जजमेंट है, इसको पढ़ के जो मैंने की क्वेश्चंस निकाले, these are the key questions. और in this thing, Gaurav bhaiya, you want to add something? Nitin ji, I think the questions which emerge from the judgment, they are numerous. I think the Pandora box is numerous. Even anyone who has read the judgment can add any number of questions to this. But there is some more space which is required in terms of number one, looking at the very memorandum and the basis of formation of that particular entity. Number two, the manner of functioning of the particular entity has also been questioned, has also been examined by the Honorable Supreme Court. Number three, now the word profit, how much of profit, as you have rightly said, has not been defined. Now I can give a luxurious, I can build up a luxurious hospital and I give it at a profit, cost plus 1,000. Will it be a charity or it need to serve the general public utility, which will be at par, serving the masses and not the classes? Now, masses versus classes and the profit motive, is it to be read together? That is also a very important question in GPU. So these are some of the questions which I would like to add on in this particular discussion. I believe this has actually been covered in charity part only. That जो मैंने आपसे question हमने discuss किया था गौरव भैया. Yes, that's something you actually elaborated in much finer manner. That what do you mean by charity? Is it whether you are giving on free, it becomes a charity, or what do you mean a markup? Yes, that's also one of the big issue. Whether you are giving to masses or some class of persons, that will make a difference between a charity. So let us discuss these issues. That demarcation, Nitinji, has also come up very finely in this particular decision. I'm just pointing out one thing. Right. Whether you are offering it does not make any difference. Who can actually go for it? Who can actually afford it? So the very purpose, now BCCI, when you're talking about BCCI in this judgment, you will be finding that yes, it is serving the general public utility function of advancing the cricket sports in India. But the kind of huge, the huge is also a very small word. When we talk about the BCCI collection of the commercial rights, the sale of the TV rights and all those things. So is it going towards general public utility or is it going into a business while it was actually formed for a general public utility function, which was advancement for sports? Now these two have to live together, but they have to be divorced for the purpose of exemption. Those fine lines also have to be read through in the judgment. Perfect. So the same body functions vis-a-vis their income. Can they exist together within the same body? Can they enjoy a part of it? Can enjoy the exemption? Those are also some finer points which we will definitely discuss in this particular discussion. Perfect. Yes, Nitin bhai and Gaurav ji, see, we have one participant, Navneet Singhal ji. I would request him. He has also got some question in his mind. So, with permission of please, sir, Gaurav, please. allow Navneet ji, if you can unmute yourself. Hello, this side Navneet Singhal. Am I audible? Yeah, Yes, you sir, are yes, sir. audible, Navneet ji. Yeah, thank you. Thanks a lot. Nitin sir, I have two basic questions regarding this issue. Like first, here we are talking about charitable trust only. And initially you defined that we have religious trust also. So when I differentiate between charitable and religious trust, whether these two case law are only on charitable trust or any inference can we call from these case law to religious trust as well? So that is my first query. And the second query is here, after all the amendments, I can say there are 7 limbs of overall charitable purpose. 6 limbs are in one bucket and the GPU advancement of GPU is in the another bucket. Right, So right. when I say that the advancement of GPU for the purpose of trade and commerce, so the trade of and commerce, whether that is also applicable to initial 6 limbs, and how we take these trade and commerce in respect of initial 6 limbs, because whole case law talks only about GPU only.
they doesn't talk about the initial 6 limbs. So going forward, how we should take if there is any trade or commerce activity in respect of providing services to poor or providing for any education, like initial 6 limbs. These are two basic questions. सर मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ मैं, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो व्हेन वी गो फॉर दिस पर्टिकुलर जजमेंट आप पूरा समझेंगे तो देन अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से और हमारा पर्पस क्या है इसको समझाने का. एज फार एज चैरिटेबल एंड रिलीजियस पार्ट इज कंसर्न्ड, आई categorically told you that this particular judgment is only in correlation to charitable trust. So appreciate कीजिएगा that there was no bearing on religious trust because section 2 subclause 15 is in relation to charitable trust only, right? Yes, yes. And what is religious trust, right? So what I want to say, religious activity is all altogether different. It has nothing to do with the charitable activity, right? So in that case, you have to read it. There could be possibility. Why I'm saying this thing? Your trust could be religious. Your trust could be charitable only. You could your trust could be charitable and religious. So what I want to say that your activity has to be confined either charitable or religious, right? In that case, if it is charitable, you have to read this particular case law as well. But if your activity is religious, this particular judgment will not give an impact. And as far as the buckets are concerned, that since we have already discussed, we have two buckets. One is 6 activities, one side, which is termed as per se activities by the Supreme Court. The other was is GPU. Please try to appreciate, though this 2 subclause 15 talks about only in the context of GPU only. But while we go through the judgment, you will understand what is the relation, whether we can do some activity in that area, or yes or no, that we have to discuss in this particular judgment itself. So you have to wait for this particular webinar to end so that you can understand each and everything. Okay, sure, sir. Thank you. Right. Sir, can we go ahead? Gaurav, can we go ahead? Hanji Nitin bhai, please move it. Just one request. We are already at 3:35 and we need to follow certain timeline. So, आप 4 का 4:30 कर लें, but let's try to finish it in next one. Perfect. Now appreciate. Sir, हमने जो 7 question, the 7 question posed by me and which has been added by Gaurav Garg also, that few questions more to be added. Please appreciate. Let me start it from 7th question onwards. पहले मैं 7 let me talk about circular first. Then we try to understand other things. Why it is so? Because in particular these judgments, there were 2 circulars. One is 11 by 2008. Note कर लीजिए. One circular is 11 by 2008, and the other one is 1/2009, wherein the various councils have the respondent has been basically saying that that these particular circulars are binding on has been issued by the department. Thus, they are binding on income tax authorities, and they are relying very heavily on them. The question is whether circular issued by the department, what is its role, binding or non-binding nature. Now, let us give you 2-3 things. What is the aid of interpretation? That is very key to note it. Now, the amendment with effect from what they said, para number 107. मैंने जो ये वाला पार्ट है पहले उठा लिया, बाकी पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे. Para 107 said that the amendment Finance Act 2008, 2009, 2012 and Finance Act 2015 do not throw any light by way of statement of objects and reasons and notes and clauses. So what I want to say, if you want to know कि भैया जो ये amendment, if you want to know what is the purpose, what is the role, why this amendment has taken place, please appreciate we have to read statement of objects and reasons and notes and clauses. Everybody knows that जब हम budget पढ़ते हैं, when you read notes and clauses, it is a replica copy of finance bill, but it is only the memorandum explaining the bill which explain you why this amendment has taken place. But what the Supreme Court said that when you read the memorandum explaining the bill, you couldn't get anything why this amendment was made. अब जब आपके पास कोई memorandum explaining the bill में ऐसा कोई explanation नहीं लिखा हुआ, that Supreme Court said, then the court would have to resort to the surrounding circumstances that lead to the amendment. अब surrounding circumstances में का मतलब क्या है? When they talk about surrounding circumstances, Supreme Court talk about 2 US judgment. One is the corporate company versus Iman 297 US 216. The other is of just Chief Judge Leonard Hent, in which they said that
history is a teacher that is not to be ignored. What they want to say, if you want, अगर आपको there is no reason which has been recorded in memorandum in the bill, तो आपको ये देखना पड़ेगा what is the history, why this particular amendment has taken place, what was the loophole which has been pending, what has to be done, what has been decided by various Supreme Court or various High Court, which is actually troubling the lawmakers, and why this judgment has, in other words, one can say it is a mischief rule. You have to see to it why this judgment has, or why this amendment has taken place, right? That mischief rule has to be read it, right? The history has to be teacher, that not to be ignored. Now, appreciate kare that Supreme Court also cited some Supreme Court judgment as well, which is talking about the history as well. One is that Bulwaka Steel Industry Limited versus Bombay Iron Steel. The other one is just Chief Justice of Andhra Pradesh and others versus LVA Dishlu and others, 1979. In these cases also, that Supreme Court says that you have to gone about the history, what is the history, and what is the mischief which has taken place, why this amendment has taken place. Now, barring after this, Supreme Court said that what are the other extrinsic aid, what are the external aids to the interpretation also. One is speeches in the parliament. Appreciate that whenever the finance minister used to present the budget in the Lok Sabha, they used to give the speech that why this amendment has been taken place, and there could be a possibility that there could be some counter questions while having a discussion on particular finance bill. You might be knowing that the judgment of August 23rd on the Benami, they have the Supreme Court has widely discussed what was argued by the then finance minister who has brought this Benami bill, and what was the question asked by them. So what I want to say, during in Lok Sabha and Rajya Sabha, there could be a possibility some honorable member of parliament would have asked some questions that that this might be impacting, or this section might have overreach, and that in particular thing that Supreme Court said that the speeches in the parliament, the speech of the finance minister who want to convey why this particular amendment has taken place is a very, very big aid to the constitution, to the statute. Now, having said that, please appreciate that Supreme Court said, what about the circulars? Appreciate that I've already told you that the various councils has actually been relying upon various circulars. One circular is circular number 1/2009. The other one is circular number 11/2008, which they discuss that department circular are saying that this type of particular activity are not to be termed as trade or business. In that case, Supreme Court, they also rely on particular two judgment. One is Namlita Javeri, another is UCO Bank Calcutta. Please appreciate what Supreme Court explained in this particular two judgment. They said that while we discussed Namlita Javeri, so what happened in Namlita Javeri, there was a particular section called 26A in section 9 in the 1922 Act. In that case, that particular 26A was put on, and wherein they said that if there's some loans and advances which has been given to somebody, it will be deemed as loan. There was so much hue and cry in 1955. So what the parliament did, the revenue tried to bring some circular which is in the benefit of the SSC, in which they say that if you bring back that particular loans and advances which are given to your related parties by 30th June 1955, section 26A will not be applicable. In this particular case, the Supreme Court held that the circulars are binding. The Supreme Court said that these court ultimately upheld the amendment, as is evident. Chairman noted the circular sought to soften the rigors of otherwise harsh consequences of immediate application of the amendment. What they want to say is that कि पहली बात तो सर जो आपके rigors थे उसको soften करने का target था. दूसरी बात, there was nothing in the circular to make it applicable for all times to come. Appreciate kare, though this particular circular is actually hitting substantive section, और उसके बावजूद वो जो section जो particular circular आया था, it is for shorter time. ये हमेशा के लिए ही नहीं था. It was more in the nature of government issuing temporary suspension of operation of the substantive provision introduced by the amendment. So what I want to say, तो सबसे पहला जो आपको point ध्यान रखना है कि अगर कोई circular substantive law की बात कर रहा है, if you talk about substantive law,
तो ऐसे केस के अंदर अगर वो मान लीजिए इट इज टॉक्स अबाउट ऑल टाइम्स टू कम, तो ऐसे केस में ये सर्कुलर बाइंडिंग नहीं रहेगा, यही सुप्रीम कोर्ट ने आगे बोला है। पर अगर मान लीजिए ये टेम्पररी सस्पेंशन की बात कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहा है, इवन दो ये सब्सटैंटिव प्रोविजन की बात करेगा, ये सर्कुलर बाइंडिंग होंगे। अदर केस ऑफ यूको बैंक कलकत्ता। अब इस सेक्शन में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दिस पर्टिकुलर जजमेंट इज इन रिलेशन टू सेक्शन 145, और सेक्शन 145 टॉक्स अबाउट व्हाट इज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। In this case, Supreme Court discussed that what is the administrative function of CBDT. तो CBDT का जो function है, the held that under section 1192 of the IT Act, the CBDT is empowered for proper and efficient management of assessment and collection of revenue to issue general and special orders in respect of any class of income or class of cases, setting for directions or instruction not being prejudicial to the SC as the guideline principles or procedure to be followed in the work related to assessment. तो समथिंग इफ इट इज रिलेटेड टू असेसमेंट, जैसे मैं बात करूं सेक्शन 145, प्लीज नोट करें ये असेसमेंट के चैप्टर में आता है। तो ऐसे केस के अंदर कोई सर्कुलर आप इशू करेंगे व्हिच इज नॉट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एससी, तो ऐसे केस के अंदर प्लीज अप्रिशिएट सर्कुलर बाइंडिंग हो जाएंगे। अब आगे सुप्रीम कोर्ट ने प्लीज नोट किया, अप्रिशिएट करें कि जो नवनीता जवेरी यूको बैंक है, ये कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस थे जहां पे हमने बोला था दैट सर्कुलर्स आर बाइंडिंग। और प्लीज अप्रिशिएट करें वाटिका टाउनशिप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब वाटिका टाउनशिप में सुप्रीम कोर्ट ने बोला a recent instance where this court took aid of expediting circular is in CIT versus Vatica Township when after holding that the amendment question applied prospectively। प्लीज अप्रिशिएट करें, पहले अमेंडमेंट की बात करी उन्होंने कि भैया ये अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिवली फॉलो करेगा। उसके बाद द कोर्ट आल्सो सपोर्टेड दैट होल्डिंग बाय citing revenue अंडरस्टैंडिंग about such prospective application in circular। तो what I want to say, सर सर्कुलर सर एक बेनिफिट तो सप्लीमेंट तो कर सकता है, पर पहले आपको सब्सटैंटिव अमेंडमेंट को या सबसे पर्टिकुलर सेक्शन को पहले आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद सर्कुलर आपकी हेल्प करेगा। तो what I want to say, while you read substantive provisions, you can't read solely depending on circular only। So what I want to say, first you have to interpret what is the substantive amendment, what is it is saying, it is prospective or retrospective as the case may be, or any other thing as to interpretation part। उसके बाद जब आपकी इंटरप्रिटेशन निकल जाएगी तो उसके बाद उसे आप सपोर्ट कर पाओगे सर्कुलर। सिर्फ सर्कुलर के बेस पे आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। नाउ while is of note of that judgment, it is that the question of whether circulars or express note issued by the executive are binding aids of constitution was not discussed। More importantly, the court first interpreted the statute its in own terms, then cited the circular। तो उन्होंने बोला पहले वाटिका टाउनशिप में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट था, जहां पे पहले सर सुप्रीम कोर्ट ने पहले अमेंडमेंट को डिस्कस किया, उसके बाद सर्कुलर को कोट किया। नाउ अप्रिशिएट करें दैट they said there was various judgment in the case of Ravi ji and others, Commission of Income Tax, then they talk about another judgment of Indian Oil Corporation, then there were talk about Ratan Melting, Keshavi Ravi ji। What they want to say that please appreciate that कि ये सारी जजमेंट ये समझाती है। और प्लीज नोट कर, रतन मेल्टिंग तो अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, विच इज सेड दैट द इंटरप्रिटेशन ऑफ सब्सटैंटिव प्रोविजन है, वो किसकी ड्यूटी है, वो तो कोर्ट की ड्यूटी है। सर ITAT and above, they are not bound by the circular। So what I want to say, sir, assessing officer is bound, CIT appeal might say it can be bound, but sir ITAT being authority, right, High Court, Supreme Court, they are not by the Supreme Court। So what I want to say, even though अगर आप कोई सर्कुलर सब्सटैंटिव प्रोविजन को डिफाइन कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, और ऐसे केस में इट इज बियॉन्ड द लॉ व्हिच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट, तो अप्रिशिएट कीजिएगा ऐसे केस में दिस सर्कुलर वाज वॉइड in the eyes of High Court, Supreme Court or ITAT, though it might be binding on the income tax authorities, but in case if some matter went to the ITAT, High Court or Supreme Court, in that case these particular authority or these particular ITAT or High Court or Supreme Court has to look into the act first, or in that case if they want to supplement it with a circular, then it will be a possibility, else not only on the basis of circular you can't make a judgment, right? So नितिन भाई एक छोटा सा क्वेश्चन, I have understood from your discussion that circulars are not binding on the courts, specifically tribunal, high court and the apex court। उसके साथ साथ एक और चीज है,
कौन से सर्कुलर? वो सर्कुलर जो सब्सटैंटिव सर जो सेक्शंस को डिस्कशन कर रहे हैं। एप्रिशिएट कीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई असेसमेंट रिलेटेड है तो मैंने बोला 119(2) लग जाएगा, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव में आप सिबिलिटी का पावर है और व्हिच इज शुड बी बेनिफिशियल टू द एससी। या दूसरा कोई ऐसा सब्सटैंटिव सेक्शन था जिसके अंदर आपका उसका फंक्शन टाइम पीरियड बहुत छोटा सा है, जैसे मैं कहा था देयर वाज अ जजमेंट ऑफ नवनीता वाला जवेरी वाला केस। उस केस के अंदर उन्होंने 3 महीने बोला था कि आप अपने एडवांसेस मंगा लो, राइट? तो इन दैट केस दैट इज एक्सेप्शन टू सब्सटैंटिव। अदरवाइज कोई भी सब्सटैंटिव अमेंडमेंट या सब्सटैंटिव सेक्शन की इंटरप्रिटेशन की बात करेगा तो ऐसे केस के अंदर सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग। बोलिए भैया। Now, I think I have missed somewhere, or maybe you've been covering. If quickly you can tell us that how this discussion is relevant for section 2, subsection 15, which we are discussing. Sir, what happens, sir, while you read this particular 149-page judgment, you will come to know that various councils, be it मैं आप name any person, आप जो मतलब आज की डेट में लीगल है हमारे इसमें इस पर्टिकुलर जजमेंट में, they are actually been arguing this particular judgment. आप कोई भी लीगल का नाम सोच भी लें, they are there. Now सारे लीगल जितने भी थे, they are actually more relying on this particular circular as well. Apart from other contention, they are also relying on these circulars. But Supreme Court said that when that particular section is not justifying what was enumerated in circular, in that case, these circulars are not binding on us. They might be binding on assisting officers, they might be binding on other department officials, but they are not binding neither on ITAT being an authority or neither on High Court and Supreme Court. They have to interpret the law in the case of substantive amendment, and only the circular will only supplement that particular interpretation only. If that particular circular interpretation is quite different, in that case, there will not be good law. नितिन भाई, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन था जी कि पहले तो जो भी बोर्ड सर्कुलर इशू करता था वो ऑफिसर्स ब्लाइंडली आंख बंद करके उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। एकदम ठीक है सर। Now circulars and notifications are 3-4 kind. One is that in case they have a representation, so Right, they sir. start the representation have been received. Certain where they say to remove the difficulties of the taxpayer, and sometimes they say to clarify the statute. इस तरह करते हैं। अभी जो 148B के ऊपर जो सर्कुलर आया था उसके ऊपर मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट दे वर एप्रीहेंसिव एंड दे हैड सेंट ए रिप्रेजेंटेशन टू द बोर्ड आल्सो, बट द बोर्ड स्टक टू इट्स स्टैंड and it was implemented, though it was incorrect. But even the Supreme Court, exercising its special powers, they said, okay, let them be treated as show cause notices and let them continue to be valid. So under these circumstances, what is the sanctity of the circulars and notifications? तो सर पहले तो मैं आपको 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और समझनी बहुत जरूरी है। पहली बात तो डिपार्टमेंट आज की डेट में इंस्ट्रक्शन इशू करता है, नोटिफिकेशंस तो आजकल बहुत कम इशू कर रहा है। दे आर इशूइंग इंस्ट्रक्शन टू पर्टिकुलर अथॉरिटीज, राइट? अथॉरिटीज। नाउ द इंस्ट्रक्शन ऑफिस बात है, दे आर बाइंडिंग ऑन दीस पीपल। दैट्स व्हाई आप देखोगे 36(1) में जो एडिशन हो रही थी और द मैटर इज टेकिंग अप फ्रॉम एओ लेवल टू सीएडी अपील। मैं आई एम नॉट गोइंग इन चेकमेट जजमेंट की बात नहीं कर रहा, पर मैं बिफोर चेकमेट से जजमेंट से आने से पहले की बात कर रहा हूँ आपको। तो नॉर्मली इंस्ट्रक्शन वाज देयर, दैट्स व्हाई दे आर एडिंग इन देयर असेसमेंट पार्ट। और उसके बाद आप सीएटी अपील और 143(1) ने भी यही शुरू सब कुछ करना शुरू कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंड सर व्हेन यू गो टू सर्कुलर, दिस पर्टिकुलर जजमेंट एक्सप्लेन्ड वेरी ब्यूटीफुली कि भैया सर्कुलर कौन से। पहला सर्कुलर ने बोला कि भैया आप 119(2) में जो पावर दी गई है वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सिबिलिटी को क्या करना है कि असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो ठीक होना चाहिए, राइट? उसमें कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और दैट सर्कुलर शुड नॉट बी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सी। दोनों कंडीशन मीट आउट होनी चाहिए। पहली बात, कौन सा सर्कुलर जो आपने असेसमेंट के लिए की है, और सेक्शन 145 जो सेक्शन है वो कहां पे है सर? वो असेसमेंट के चैप्टर में ही है। दो इट टॉक्स ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग, बट ये असेसमेंट के चैप्टर में ही है, तो इसीलिए 119(2) का जो सर्कुलर है वो बाइंडिंग है। दूसरी बात सर, जो दूसरा पार्ट है इसका, इट शुड नॉट बी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सी। तो व्हाट आई वांट टू से सर, ये दोनों चीजें मीट होंगी तब सर्कुलर बाइंडिंग होगा। प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। आर गेटिंग पॉइंट? सर्कुलर का स्टे लिया था, मान लीजिए हाइपोथेटिकली वो इट इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सी, तो ऐसे केस के अंदर पहली बात तो आप आगे जाएंगे और आप बोलेंगे ये व्हाट इज दिस
पर हैविंग सेड दैट, अगर दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है तो सर कलकत्ता वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने समझाया, और जिस बात को इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि अगर इस तरह का सर्कुलर है दैट इज बाइंडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। पर मान लीजिए जो सर्कुलर की बात कर रहे हो, जिस तरह की आप सर्कुलर की बात कर रहे हो, पॉसिबिलिटी 148B की बात कर रहे हैं, जो आपने बोला इंस्ट्रक्शन जो आई और बाद में सर्कुलर जो निकाल दिया इन्होंने, तो अप्रिशिएट करें सर वो सर्कुलर। पहली बात तो मेरा खुद का मानना है कि वो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है जो कर रहा है वो, उसको दैट इज नॉट गुड लॉ टू बी फ्रैंक। आप सही मायने में जो सही इंटरप्रिटेशन वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आप अपने आप से इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो, राइट। हैविंग सेड दैट, आई शुड नॉट क्रिटिसाइज वेरियस कोर्ट्स, पर अब देखिए राजस्थान हाई कोर्ट ने फिर भी जजमेंट ठीक दे दिया इन रिलेशन टू 15-16। अदरवाइज बाकी हाई कोर्ट्स तो ये बोल रहे हैं कि नथिंग डूइंग, सर आप ऐसा करो कि यू गो बैक एंड लेट द असेसमेंट टू बी डन। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, कहीं ना कहीं सर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इन ट्रू स्पिरिट पढ़ा नहीं जा रहा बाय वेरियस हाई कोर्ट। यस, देयर आर फ्यू हाई कोर्ट्स व्हिच आर रीडिंग इन दैट स्पिरिट, पर पर्टिकुलर दोस हाई कोर्ट्स आर नॉट टेकिंग इट इन अ ट्रू स्पिरिट। अगर आप बात करोगे इन द रिलेशन ऑफ टचस्टोन ले लें जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था, या फिर एक और जो जजमेंट अभी आया है जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया पीछे, इन रिलेशन टू दोस नोटिसेस, जो सर जहां पे डिपार्टमेंट भी ये बोल रहा है कि भैया 31/3 को इश्यू हो गया था 2021 में। अब वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां तक बोल दिया कि देखो जी अगर 31/3/2021 में इश्यू हो गया तो फाइन, अगर बाद में माना जाता है तो हम 148B लगा देंगे। अब क्वेश्चन इज वेदर यू हैव अ पावर। So there's a difference between the power given to the Supreme Court and High Court. Supreme Court has a power. Normally देखिए दो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 141 और आर्टिकल 142। आर्टिकल 141 में क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ लेट डाउन करता है तो व्हाट डिड दे यूज्ड टू डू, वो जो पुरानी जजमेंट को पुरानी डेट से समझाता है, इस सेक्शन का मतलब ये था। पर आर्टिकल 142 के अंदर इनके पास एक सुपर पावर है, एज इफ दे आर अबव द पार्लियामेंट, दे कैन मेक द लॉ। पर इस तरह की कोई पावर सर आपके पास हाई कोर्ट के पास नहीं है। तो what I want to say कि when you relying on this particular thing कि भैया सर्कुलर बाइंडिंग है या नहीं है, इंस्ट्रक्शन है या नहीं है, तो ये दो चीजें आप हम अब दिमाग में बिठा लें। वन थिंग, पहला क्या वो असेसमेंट रिलेटेड है और इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो यस इट इज बाइंडिंग। दूसरा, मान लीजिए कि सब्सटेंटिव प्रोविजन की बात करता है, सब्सटेंटिव की बात करता है जिसको वो ट्वीक कर रहा है, या फिर सब्सटेंटिव सेक्शन को वो इंटरप्रेट करने की बात कर रहा है, और जहां पे ऐसे केस के अंदर वो को रिलीफ दे रहा है, इट इज गिविंग अ रिलीफ, प्लस साथ के साथ इट इज नॉट फॉर लॉन्गर पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए, तो ऐसे केस में सर्कुलर बाइंडिंग होगी। अदरवाइज सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग, बट द सुप्रीम कोर्ट सेड। ठीक है सर। मेरा क्वेश्चन अभी भी थोड़ा डिफरेंट है, बट आई एम सेइंग दैट द बोर्ड इशूज 3-4 टाइप्स ऑफ सर्कुलर्स, some are clarificatory in nature, some are to remove the difficulties, some are to interpret, one which is clarificatory in nature, which everybody said that there was confusion. Then do you think that only those are not binding which are interpretive in nature? अतुल सर बताऊं क्या है, अतुल सर बेसिकली, अतुल सर एक मिनट सर, सर अगर आप इस जजमेंट को प्रॉपर पढ़ें, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं आपको बताऊं, आप सर्कुलर को बहुत डीपली पढ़ें, प्लीज अप्रिशिएट करें। यहाँ पे तो बकायदा सर ऐसा भी हुआ है, मैंने इससे कुछ स्पीचेस भी कमेंट डाले जहाँ पे सर फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि दैट सर वो सर्कुलर फुल क्लैरिफिकेशन करने के लिए देंगे। 2008 की बात करें, 2009 की बात करें, यहाँ पे बकायदा फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि वो स्पीच में बताया कि हम सर्कुलर सीबीडी को बोलेंगे, सर्कुलर इशू करेंगे कि व्हाट इज हमारा टारगेट क्या है। तो सर वहां पे उसको भी नकार दिया है सर सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सॉरी, आप फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट लिख दें, जो मर्जी लिख दें, विल नॉट मेक इन डिफरेंस। अगर आप सब्सटेंटिव अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट करने की बात कर रहे हैं, वो काम मेरा है, वो आपका काम नहीं है। अगर आपको कुछ करना था तो पुट इट, आपको कौन मना कर रहा है एक्सप्लेनेशन ऐड करने से? पार्लियामेंट को कोई मना नहीं कर रहा। आपको कुछ दिक्कत है, एक्सप्लेनेशन ऐड कर दें। आप सर्कुलर के थ्रू सर इंटरप्रेट थोड़ा करेंगे। जिस का जो सर्कुलर है वो उनका कहना है डिपार्टमेंट की पोजीशन हो सकती है कि डिपार्टमेंट का व्यू क्या है। My view कि what I interpret. Nitin ji, I am just concluding what you said in very simple words. Atul ji, in para 123 of this decision, Honorable Supreme Court decision, they have referred to 3 earlier decisions of the Honorable Supreme Court, primarily the decision of Ratan Melting and Wire Industries. The proposition is very clear. If the circular is within the framework, if it is in the advancement of the framework of the law, it will be binding on the authorities, number one.
If the circular goes against the plain words of the statute, it will not be binding on the authorities also. Number 3, circulars are never binding on the courts. So these are the 3 plain vanilla propositions which have been laid in the earlier decision, and in para 123, the earlier decisions have been again, the answer has been given in affirmative by the Honorable Supreme Court in this decision also. So I hope I have answered your question. This is the exact answer I was looking for. Yes, sir. So para Thank you. 123, just please look at it of the Ahmedabad Urban Development Authority decision. Number 2, in the very recent propositions in terms of which have come out from various honorable High Court decisions in whether the assessment years can be opened up or not, these are a different Pandora box. How those particular decisions have applied the Honorable Supreme Court. Honorable Delhi High Court in the Pankaj decision has beautifully read down in the favor of the assessee, section 13 of the IT Act. So all the emails which have gone from the server on after 31st of March, those particular issuance were held that these were issued post 31st March. Read it in that manner. Whether it will be reopened under 248A(b) or not, those are separate questions. The primary questions in every decision should be very clear. So allow us, because time does not permit us to go into 148A(b) right now. We stick to it. Circulars we have closed. Nitin bhai, back to you. Thank you, sir. बस एक चीज पॉइंट टू पॉन्डर है वो ध्यान रखना है. जैसे नॉर्मली हम जब मिस्चीफ रूल की बात करते हैं, बीट 50C, 56(2)10, 56(2)7B, हम जब इसकी बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट केपी वर्गीस. और इस जजमेंट में केपी वर्गीस को बहुत अच्छे ढंग से समझाया. इन्होंने बोला प्लीज अप्रिशिएट करें, जब केपी वर्गीस जब बात करता है, इट मेनली रिलाई ऑन सर्कुलर. तो व्हाट आई वांट टू से, व्हाइल यू रिलाइंग ऑन केपी वर्गीस, तो वन थिंग यू हैव टू डू इट कि पहले आपको सेक्शन को अपने तरीके से इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा बाय सर्कुलर. अगर आप सिर्फ सर्कुलर से आप अपने आप को बोल रहे हैं कि देखिए सर ये तो एंटी मॉडर्न मेजर है, सर्कुलर भी ये बात बोलता है, ये आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा. तो व्हाट आई वांट टू से कि सर प्लीज सर पहले मेमोरेंडम स्प्रिंग द बिल, व्हाट इज द मिसचीफ, उसको इंटरप्रेट करें. मेमोरेंडम स्प्रिंग द बिल ने क्या बोला, कोई स्पीचेस ने क्या बोला, अलग अलग कोर्ट ने क्या बोला, और सॉरी अलग अलग लोगों ने क्या क्वेश्चन किए और काउंटर जवाब क्या दिया. अगर आपको वो चीज मिल जाए तो दैट विल हेल्प यू, सर्कुलर वहां पे सप्लीमेंट कर पाएंगे. तो व्हाट आई वांट टू से, व्हेनेवर यू आर यूजिंग केपी वर्गीस इन रिलेशन टू एंटी मॉडर्न मेजर, बीट 50C, 56(2)10, तो ये आपको हमेशा प्लीज ध्यान रखनी है कि सिर्फ सर्कुलर आपको नहीं समझा पाएगा कि एंटी मॉडर्न मेजर है. मैं क्यों आपको सर देखिए, अदरवाइज हर अमेंडमेंट एक मिसचीफ रूल है, कोई भी अमेंडमेंट होती है मिसचीफ रूल है. बट द क्वेश्चन इज इफ इट इज एंटी मॉडर्न मेजर और नॉट, तो यू कांट रिलाई solely on particular circular. It has to come out from that particular object and reasons. Memorandum in the bill also, right sir? Now please appreciate करें, अगर हम brief history की बात करें, that there was section 4(3) पहले. नितिन भाई, just we are 1 hour done. बस जल्दी खत्म करो मेरे भाई, जल्दी खत्म करो. मैं थोड़ा सा बस ये चीजें समझानी 2 मिनट की जरूरी है, मैं जल्दी खत्म ही कर रहा हूँ मेरे भाई, चिंता ना करो. और सेक्शन 4(3) था, 4(3) को काफी बार अमेंड हुआ. देन सेक्शन 2 सब क्लॉज 15 आ गया, प्लीज नोट कर लें, जहां पे उन्होंने समझाया कि चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड रिलीफ टू द पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ एंड एडवांस ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल प्यूरिटी. आगे लिखा हुआ था नॉट इन्वॉल्विंग द कैरिंग ऑफ एनी एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट. अप्रिशिएट करें, ये जब 1961 के एक्ट में डाला गया, ये अलग से लाइन में ऐसे लिखी है, व्हाई इट हैज दिस सेक्शन हैज बीन डिलीटेड. और अप्रिशिएट करें, जितनी भी जजमेंट थी, सूरत सेल की जजमेंट है जो 5 जज बेंच जजमेंट थी, और उसके बाद जितनी भी जजमेंट आई, और इवन जो जजमेंट हाई कोर्ट दे रहा था, दे आर रिलाइंग ऑन दिस सूरत सेल, whereas in that particular judgment Supreme Court has beautifully explained that आपको पहले dominant purpose देखना है. Now Supreme Court said, now in this case they said that कि अब तो अमेंडमेंट बहुत सारी हो गई है, बहुत सारी. सेक्शन 215 अगर आप पढ़ना शुरू करें, अब जो डोमिनेट पर्पस वाली बात है वो सब खत्म हो चुकी है. जब वो डोमिनेट पर्पस वाली बात खत्म हो चुकी है, तो इन दैट केस क्या वो पर्टिकुलर सूरत सिल्क वाली जजमेंट आज भी प्रिवेल करेगी? अभी मैं आगे समझाऊंगा, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सॉरी इट इज नॉट एप्लीकेबल. तो ये पर्टिकुलर आपने चीजें नहीं पढ़नी है. नाउ हैविंग सेड दैट,
दे पुट 11 सेक्शन 11(4)(4)(a) की बात भी करी। मैंने आपको क्वेश्चन डाला था कि 11(4)(a) क्या कोई कंडीशन डालता है? प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर। 11(4)(a) कुछ ऐसे बोलता है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और 3(a) shall not apply in relation to any income of a trust or institution being profit and gains of business unless the business is incidental to the attainment of the objective of the trust or as the case may be institution and separate books of account has to be maintained. तो what I want to say, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, कहने का मतलब ये है कि सर क्या जो सेक्शन 2+14 में 15 के अंदर जब आप पढ़ोगे प्रोविजन की बात करोगे, जहां पे बोलता है कि भैया अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हो जीपीयू के अंदर, और ऐसे केस में 2008 में जब आया था तो 10 लाख से ऊपर रिसिप्ट नहीं होनी चाहिए। 2010 में जब 9 में अमेंडमेंट हुई उसे 25 लाख कर दिया गया, और जब 2015 में अमेंडमेंट करी तो उन्होंने बोला भाई 20%। तो उन्होंने बोला ऐसे केस के अंदर क्या सेक्शन 11(4)(a) क्या सर एक बैरियर क्रिएट कर रहा है कि इट हैज टू बी इंसिडेंटल आल्सो? तो सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्ड इट वेरी ब्यूटीफुली। दे सेड कि सर ये जो 11(4)(a) था ये तो पहले से था 1984 से, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। और जो अमेंडमेंट हुई है 2008 में, 9 में या 15 में, वो बाद में हुई है। और तो सेक्शन 11(4)(a) है वो सबकी बात कर रहा है। इट इज मोर और लेस व्हाट इट टॉक अबाउट, इट टॉक्स अबाउट मशीनरी प्रोविजन। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, और इसका मैं क्वेश्चन सिंगल साहब आपका आंसर भी दे रहा हूं इसके अंदर, कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो परसे एक्टिविटी में या फिर आपके सर रेसिड्यूरी क्लॉज के अंदर है, ऐसे केस के अंदर सर दैट पर्टिकुलर थिंग शुड बी इंसिडेंटल। इंसिडेंटल मतलब आप बिजनेस कर, आप चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं, साथ के साथ वो एक्टिविटी बिजनेस के रूप में चल रही है। आप कोई अलग थलग से कोई एलियन काम नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर से हाइपोथेटिकली ऐसे मान लेते हैं कि मान लीजिए आपने कोई स्कूल चला रहे हैं, तो स्कूल के साथ साथ आप किताबें भी फ्री दे रहे हैं या किताबें कुछ पर्टिकुलर कॉस्ट पे दे रहे हैं। आप मान लीजिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं या फिर बहुत कम फीस लेके पढ़ा रहे हैं। अब ऐसे केस के अंदर आपको एजुकेशन करना है, तो जब एजुकेशन आप जब करेंगे तो ऐसे केस में आप कम कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए उनको खाना खिला रहे हैं, साथ मिड डे मील दे रहे हैं। इन दैट केस, पर्टिकुलर केस, दैट कुड बी टर्म्ड एज बिजनेस, पर इट इज इन इंसिडेंटल टू योर एजुकेशन या फिर रिलेट टू द पुअर। तो व्हाट आई वांट टू से, इट शुड बी इंसिडेंटल। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हेन यू डू अ बिजनेस इन रिलेशन टू पर्सनल एक्टिविटीज, 11(4)(a) की कंडीशन आपने देखनी है। पर हैविंग सेड दैट, जब आप 11(4)(a) की बात करते हैं इन रिलेशन टू 2+15, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्ड इट कि भैया जो मेन बार है वो सेक्शन 2+15 में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वो जीपीयू एक्टिविटी के साथ कोरिलेटेड होना चाहिए। इट शुड बी इंटरकनेक्टेड विद दैट। तो सही मायने में व्हेन यू टॉक अबाउट इंसिडेंटल एक्टिविटीज इन रिलेशन टू दैट, वो ओनली से सप्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि 11(4)(a) तो पहले से ही था। नाउ अच्छा गौरव भैया, हमारे पास टाइम है कितना? 10 मिनट है, 15 मिनट है, कितना टाइम है ये बता दो मुझे आप। तो मैं सो दैट आई कैन क्लोज द थिंग्स, क्योंकि अदरवाइज 149 का पेज जजमेंट क्या है, मैं क्रक्स समझाया 15 मिनट्स 50 मिनट। तो आई विल गो टू द क्रक्स ओनली, डायरेक्टली मैं क्रक्स पे पहुंच जाता हूं, सीधी बात है, वो बेटर है। अभी एक्सप्लेन यू द क्रक्स, राइट, वो बेटर है। But I must say it is a very detailed judgment. डिटेल सर मैं आपको बताऊं, सर मैं आपको ऑन द कॉन्ट्री बताऊं आपको। लेट मी टेल यू वन थिंग, बस 1 मिनट ले रहा हूं, फिर मैं आपको चीजें समझाऊंगा आपको। सर जब आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो एवरीबडी सेड दैट यार क्या जजमेंट आ गई, मतलब क्या जजमेंट आ गई। तो उसके बाद सर ने बोला यार क्या बढ़िया जजमेंट आ गई। आई ऑलवेज से, दो इट टॉक्स अबाउट आर्टिकल 142, मेरा पर्सनल मानना जजमेंट इज क्वाइट गुड, सेम एज दिस जजमेंट। एप्रिशिएट करें जब इस जजमेंट का क्रक्स मोटा मोटा क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा क्रक्स समझा देता हूं आपको ताकि समझना आसान होगा। दे सेड कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, राइट, और वो एक्टिविटी जब बिजनेस कर रहे हो, लेट अस से आप गरीबों को दे रहे हो और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी समझाया है कि भैया आप मैथमेटिकल प्रिसिशन से नहीं कैलकुलेट कर सकते कि मैंने मान लीजिए अगर गरीबों को ये काम पर्टिकुलर काम करने के लिए 100 रुपये कॉस्ट आ रही है तो 100 रुपये लेने हैं। मैथमेटिकल प्रिसिशन तो काम कर ही सकते हैं। आप 100 के 101 ले रहे हो, 102 ले रहे हो, 105 ले रहे हो, 2, तो क्वेश्चन स्टिल लाए व्हाट गौरव गुप्ता जी सेड कि भैया मार्जिन का मतलब क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल मार्कअप यू वांट टू से। तो ऐसे केस में लेट अस नॉट गो इन दैट डिटेल्स, व्हाट दे वांट टू से, अगर आप नॉमिनल मार्कअप ले रहे हो, थोड़ा सा प्रॉफिट मतलब थोड़ा सा 101, 102, 103, 104 एज द केस में भी, तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो प्लीज अप्रिशिएट कर, उन्होंने बोला भैया ये पर्टिकुलर एक्टिविटी जो आप कर रहे हो वो पहली बात तो बिजनेस में भी नहीं आएगी। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हेन यू कैलकुलेट 20%, व्हेन यू कैलकुलेट दैट 20%, तो उस केस के अंदर वो एक्टिविटी नहीं आएगी। लेट अस से व्हाट दे वांट टू से, मान लीजिए आप दो तरह के काम कर रहे हो। एक, मान लीजिए कोई गरीब है, गरीब को कोई हॉस्पिटल है, मान लीजिए जो गरीब है उसको तो आप सब्सिडाइज दे रहे हो, लेट अस से कॉस्ट आपकी 100 रुपए है और आप उससे 80 रुपए में दे रहे हो या 60 रुपए में दे रहे हो, पर उसको कंपनसेट करने के लिए आप सर अमीरों से या फिर जो हाई क्लास है, विच कैन, आई शुड नॉट से अमीरों से, दोज पीपल विच कैन अफोर्ड, उनसे आप 100 रुपए के 200 रुपए ले रहे हो, 250 रुपए ले रहे हो, राइट? In that case, the profit is huge, though you are subsidizing that particular relief to the poor. In that case, सर जो एक्टिविटी आप सब पुअर के लिए कर रहे हो वो आप 20% में कैलकुलेशन में नहीं लोगे, whereas आप सिर्फ वही कैलकुलेशन में लोगे जो आपकी सर जो आप एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर विद अ प्रॉफिट मोटिव ले रहे हो, दो यू वांट टू सब्सिडाइज दैट पर्टिकुलर रिलीफ टू द पुअर, बट इफ यू आर टेकिंग समथिंग फॉर प्रॉफिट, आप प्रॉफिट मोटिव पे जिस काम पे काम कर रहे हो उसको सिर्फ 20% की कैलकुलेशन में लेना है। दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ सेक्शन 2/15। तो व्हाट आई वांट टू से कि जब हम बिजनेस की बात करते थे तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी यार बिजनेस का मतलब क्या है। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, आपको दो तरह का सेट ऑफ बुक्स बनाने पड़ेंगे आपको। अब पहले सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट तो बनाने हैं, आपको दो सेट ऑफ बुक्स बनाने पड़ेंगे, जहां के अंदर पहले आप बताओगे रिलीफ टू द पुअर, भाई मैं इन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम कर रहा हूं या एजुकेशन में काम कर रहा हूं, जहां पे मैं चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा हूं, तो उसको आपने बिजनेस में काउंट नहीं करना, चाहे उसके लिए आप कुछ सब्सिडाइज पैसे ले रहे हैं, चाहे आप 100 के बदले में 100 रुपए ले रहे हैं, 100 रुपए के बदले में 102 ले रहे हैं, 103 ले रहे हैं, चाहे आप 80 रुपए ले रहे हैं, तो वो वाला पोर्शन आपको हटा देना है। वेयरएज जहां पे आपका टारगेट प्रॉफिट मोटिव का है, जहां पे आपका टारगेट प्रॉफिट मोटिव का है, उसी को उठा के कवर करना है। नाउ लेट मी गो टू क्वेश्चन। मैं सीधा क्वेश्चन में आपको फिर एक एक आंसर समझा देता हूं आपको, वो बेटर है, रेलेवेंट पैराग्राफ लेने का फायदा होगा नहीं। एक मिनट दीजिए बस में। नाउ 11.4a मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि भैया इज नथिंग इज नॉट क्रिएटिंग वेरियर। द अदर क्वेश्चन इज 1046 और 1028 23, क्या ये बार करता है? उन्होंने बोला क्या ऐसा आप बोलोगे कि भैया स्पेसिफिक सेक्शन प्रिवेल करेगा? आंसर इज नो। दे सेड कि भैया 1046 की कुछ कंडीशंस है। तो क्या था, पहले 1020A था, 1023 था, तो जब मान लीजिए वो कंडीशंस है, पर उन कंडीशन में कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं बोला आप बिजनेस, उन्होंने ये बोला हुआ आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। पर ऐसे केस में कुछ ऐसी एक्टिविटी है जहां पे आपको सर आप 1046 में तो फॉलो करते हैं क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, इस वजह से वो आपको 1046 या 1028 1023 आपको एग्जम्पशन नहीं मिल रही है। पर अगर वो एक्टिविटी जीपीयू में आती है, जनरल पब्लिक यूटिलिटी में आती है, तो ऐसे केस के अंदर सर आपको सर कोई बार नहीं है, आप सर सेक्शन 11, 12, 13 की एग्जम्पशन ले सकते हैं। सर प्लीज नोट कर ले, ये पर्टिकुलर बात इन्होंने बोली नहीं, लेकिन ये बात कंफर्म्ड है व्हिच व्हाट दे हैपेंड। आप एक बात लिख ले सर, जो चीज लिखी है उतना ही पढ़ना है, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो मेरा पर्सनल मानना, ये पर्टिकुलर चीज इन्होंने चेकमेंट में नहीं दिखी, उसकी मैं बाद में बात करूंगा, टाइम परमिट करेगा। सर देखिए आप नोट करें 2011 अब 2021 या 22 में जो अमेंडमेंट हुई है, वहां पे उन्होंने बोल दिया 1023 या सेक्शन 11 कोई एक ले लो। सर ऐसा कुछ नहीं है इन रिलेशन टू 1046 और सेक्शन 11, 12, 13। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर आपको एक जगह नहीं मिल रही है, आप कंडीशन पूरी नहीं कर रहे, तो ऐसे केस में आप 11, 12, 13 में जा सकते हो, कोई बार नहीं है। दूसरी बात सर, व्हाट कैन बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। सो सुप्रीम कोर्ट ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया और बाकायदा इन्होंने समझाया, जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में कोई चोर आपकी कोई जेब काट लेता है, तो क्या आपने आप बोलोगे एजुकेशन है समकिन से कि भैया एजुकेशन ये मिली कि भैया पैसे को अपने पास छुपा के रखना चाहिए, अपनी जो पॉकेट है वो बंद रखनी चाहिए, ज्यादा पैसे को बाहर दिखाना चाहिए, एजुकेशन मिली, तो विल इट टर्म्ड एज एजुकेशन? या फिर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं मान लीजिए मैं कहीं बैठा हुआ था, तो वहां पे मैंने ये सीखा, वो 4 बंदे बात कर रहे थे, तो मुझे ये सीखा यार बात करने का ढंग कैसे होना चाहिए, तो इज इट एजुकेशन? आंसर इज नो। दे सेड एजुकेशन मींस सम हैज टू बी सिस्टमैटिक, कुछ प्रॉपर एजुकेशन का तरीका होना चाहिए, सिस्टमैटिक ढंग से अगर एजुकेशन दी जाती है तो उसे एजुकेशन कहा जाएगा सेक्शन 2/15 के अंदर। दूसरी बात, चैरिटी मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी। दे सेड चैरिटी का मतलब अगर आप कोई कुछ भी काम कर रहे हैं फॉर जीपीयू कर रहे हैं आप, और ऐसे केस में आप कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर आप स्मॉल मार्कअप ले रहे हैं, बहुत मार्जिनल मार्कअप ले रहे हैं, तो ऐसे केस में वो पर्टिकुलर चीज उसके बिजनेस में नहीं आएगी।
इसका मतलब जो काम आप प्रॉफिट मोटिव पे कर रहे हैं उसी को आप सिर्फ काउंट करेंगे रिलेशन टू कैलकुलेटिंग 20%. नाउ दे सेड unless the context otherwise requires, what they want to say unless the context otherwise requires का मतलब ये है कि प्लीज नोट कर ले, अप्रिशिएट करें कि ऐसे केस के अंदर दो आप अगर देखना चाहें तो इसमें इन्होंने समझाया आपको सेस, जब वहां पे अब आप सेक्शन पढ़ते हैं सेक्शन 215 के अंदर हमें फीस की बात भी करता है, सेस की बात भी करता है, कंसेशन की बात भी करता है. वहां पे एक हरीश सालवे साहब ने ये आर्गुमेंट भी दिया था सर कि सेस सही मायने में इट हैज टू बी रीड एज रिवर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एग्जाम जनरलिस्ट, तो वो सेस को इनके साथ भी पढ़ना चाहिए, तो उसको भी बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है. पर हैविंग सेड दैट दे सेड कि सर जब आप अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर लिखा हुआ है तो वहां पे पहले आप सेक्शन में देखेंगे कि जो सेक्शन में डेफिनेशन दी हुई है क्या वो डेफिनेशन की सेक्शन उस कंटेक्स्ट में फिट हो रही है या नहीं हो रही. अगर फिट नहीं हो रही है तो यू हैव टू रीड समथिंग डिफरेंट. पर ऐसे कंटेक्स्ट में दे सेड इट्स क्वाइट फाइन, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है. नाउ हैविंग सेड दैट दे टॉक अबाउट few ऑफ द थिंग्स, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक दो चीजों पे तो मैं चाहूंगा गौरव गर्ग जी, क्योंकि ही इज करंटली NIRC मेंबर, ही शुड आल्सो टेक अप दिस पर्टिकुलर पार्ट. अप्रिशिएट कीजिएगा यहाँ पे लिटिगेशन के अंदर सर ICI इज आल्सो आवर वन ऑफ द लिटिगेंट. तो नाउ व्हाट हैपेंड इन दैट केस, एक मिनट दीजिए. सुप्रीम कोर्ट हैज डेल्ट विद एवरी टाइप ऑफ सोसाइटी, हर टाइप ऑफ सोसाइटी से डील किया. और व्हाट दे सेड दैट मान लीजिए कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ये कॉर्पोरेशन है, राइट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है या फिर कॉर्पोरेशन है, ऐसे केस के अंदर अगर वो 1020A या फिर कहीं पे जा रही है तो कोई बार नहीं है, दे कैन गो टू सेक्शन 215 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. और मान लीजिए कोई अथॉरिटी ऐसी है जहां पे रेट वेट ऑलरेडी प्रिस्क्राइब के द्वारा है, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं है. जैसे मान लीजिए कोई आप कोई जैसे ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नोएडा है, या फिर आप मान लीजिए अगर आप पंजाब में जाए बठिंडा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है, जलंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट है, आप मतलब बहुत वहां पे सारे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट होते हैं, उनका टारगेट ये होता है कि भैया लैंड को डेवलप करना है. तो दे वांट टू से कि भैया लैंड को सेल परचेज करना वो बिजनेस नहीं है, वहां पे टारगेट क्या है, जो आपके पैसे आएंगे उससे आप इंडस्ट्री डेवलप करोगे, इसलिए आप लैंड को बेच रहे हो. तो व्हाट आई वांट टू से, इट इज नॉट अ पर से बिजनेस. इन दैट केस कोई भी सच अथॉरिटी है, कॉर्पोरेशन है जो काम कर रही है विच इज इन द विच इन्वॉल्व इन द एडवांसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ GPU, ऐसे केस के अंदर उनको GPU कैटेगरी में बेनिफिट मिल जाएगा. नाउ उसके बाद इन्होंने बात की भैया दोज अथॉरिटी विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द इंस्टीट्यूट, राइट. इन दैट केस लेट इज मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहां पे MIDC की बात भी करी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वहां पे भी इन्होंने बोला आपको चेक करना है कि क्या आप प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हो या फिर आपका टारगेट जनरल पब्लिक यूटिलिटी को सर पुश करना है. अगर आपका टारगेट जनरल पब्लिक यूटिलिटी को पुश करना है, उसके बावजूद अगर आपको कुछ सरप्लस या फिर कोई प्रॉफिट मिल जाता है, दैट विल नॉट टर्म एज वर्किंग इन अ ट्रेड और बिजनेस. व्हाई इट इज सो, दे सेड कि मान लीजिए लेट अस से अगर आप सबको GPU के सबको आप बोल दोगे ट्रेड बिजनेस है, तो ऐसे केस में देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि भैया जो सारी एक्टिविटी आपकी सब बिजनेस वाली बन जाएगी, तो ऐसे केस में तो GPU आप कभी रह नहीं पाओगे. तो उन्होंने बोला आपको पहले सर व्हाट इज द मोटिव, वो आपको चेक करना पड़ेगा. नाउ दिस इज बेसिकली फॉर द इंस्टीट्यूट में इन्होंने सब पूरा जो आपने देखा होगा, नॉर्मली आप इलेक्शंस के टाइम पे सुनते भी हो कि हमारा इंस्टीट्यूट क्या करता है, क्या है, किस तरह से है, फिक्सेशन सब कुछ होता है. द की इशू इज, उन्होंने बोला भैया हमारा इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल चार्ट अकाउंटेंट्स को, और इट इज इन रिलेशन टू GPU ओनली, वो बच्चों को पढ़ाता है, कोर्सेज बहुत सस्ते हैं, बहुत कम कॉस्ट देते हैं. पर साथ के साथ उन्होंने एक कॉशन दी, और प्लीज नोट करें इस कॉशन को, मैं चाहूंगा कि गौरव भैया प्लीज ध्यान रखें और आगे बात भी करें. Para number 197, they said at the same time this court would sound a note of caution. It is important at times while considering the nature of activities which may be part of statutory mandate that regulatory bodies may perform, whether the kind of considered charge is vastly and significantly higher than the cost it incurs. और प्लीज नोट करें इसको, रीड नंबर पैरा 202 जो एपेक्स के लिए आया था, इसको मैं पढ़ाऊंगा, आपको दिखाता हूं उसमें क्या लिखा था. Why I am saying this thing, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर. हमारा इंस्टीट्यूट, हमारी बहुत सारी कमेटीज है इंस्टीट्यूट की, बीट चाहे कॉन्करेंट ऑडिट का कोर्स हो, चाहे इंटरनेटेशन का कोर्स हो, चाहे GST का हो, चाहे फॉरेंसिक का कोर्स हो, उस कोर्स में आप फीस लेते हैं. और आज की डेट में क्या हो रहा है सर, पहले तो ये होता था द कोर्सेज इज हैपनिंग, और कोर्स हो रहा था, होटल्स में हो रहे थे, देयर वाज सम एक्सपेंडिचर ओवर देयर. पर आज की डेट में सर अब कॉस्ट कंपैरेटिवली अब जाके कम करी है. बीच में तो उन्होंने कॉस्ट बिल्कुल कम नहीं करी थी, अब इन्होंने कॉस्ट पीछे कम कर दी थी. तो ऐसे केस में इस तरह के कोर्सेज के बारे में सर सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट नहीं किया है.
ये उनकी नजर में नहीं आया है। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर आप इस तरह का कोई कोर्स चला रहे हैं और अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं, दैट इज फाइन। पर अगर मान लीजिए उसमें से प्रॉफिट एलिमेंट बहुत ज्यादा निकल जाता है, तो ऐसे केस में सुप्रीम आईसीआई की एग्जम्पशंस को दिक्कत आएगी। पर हैविंग सेड दैट, ओवरऑल दे सेड आईसीआई और जितने भी ऐसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सिंस दे आर इम्पार्टिंग, दे आर रेगुलेटिंग सम प्रोफेशन, दे आर एक्चुअली बीन डूइंग जीपीयू, तो ऐसे केस के अंदर सर आईसीआई ट्रेड और बिजनेस में नहीं आता है। अदर दे सेड, जो एपेक की बोर्ड की बात करी इन्होंने, जहां पे इन्होंने समझाया, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशनल बोर्ड है मान लीजिए, राइट, एप्रिल प्रमोशन बोर्ड है, वहां पे इन्होंने समझाया, प्लीज अप्रिशिएट करें। दे सेड, जो पैरा नंबर 202 की बात कर रहा हूं, दे सेड दे आर ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग, डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू पब्लिकेशन, holding awareness camps, events would be broadly covered in trade promotion. However, when a trade promotion body provides individualized or specialized service, such as conducting paid workshop, training courses, skill development course certificate, and higher venues, and then let out to the industrial, trading, or business organization to promote such, advertise their respective business, the claim for GPU status need to be scrutinized main closely. They said कि सर जब तक आप किसी पर्टिकुलर बॉडी बने हो, बी इट फिकी, बी इट एनीथिंग, तो वहां पे तो ठीक है, आपका टारगेट है, यू आर रिप्रेजेंटिंग टू द गवर्नमेंट, आपका टारगेट है। पर जब आप मान लीजिए सेमिनार्स करना शुरू करते हो, तो कैंप्स ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हो, और उस केस के अंदर आप ह्यूज फीस लेते हो, आप वहां पे बोलते हो कि भैया किसने अपनी कैनोपी लगानी है, किसने प्रमोट करना है, तो वहां पे आप उनसे चार्जेस लेते हो। तो इन दैट केस, अब ऐसे केस के अंदर ये ट्रेड और बिजनेस में फॉल करेगा, तो ऐसे केस में वो 20% वाली कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। इसी पैराग्राफ की मैं बात कर रहा हूं, प्लीज नोट कर ले, ये पैराग्राफ सर हमारे इंस्टीट्यूट के लिए भी रेलिवेंट है। नाउ देन दे टॉक अबाउट नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, एयरनेट, निक्सी, जीएसआई, जीएस1। प्लीज नोट कर ले, एयरनेट और निक्सी में का काम क्या है। एयरनेट का काम है फॉर सैटेलाइट पर्पसेस, एंड निक्सी का मतलब आप देखोगे, जैसे मेरी वेबसाइट का मतलब है, हमारा वेबसाइट है www.globalca.in, तो जब आप .in यूज करते हैं तो प्लीज अप्रिशिएट करें .in का टारगेट क्या है, सब अप्रिशिएट करें। .com इंस्टीट्यूट इंडिया गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि हमें इंडिया को प्रमोट करना है, कल को ऐसा ना हो कि बाहर का बंदा सारे डोमेन नेम बंद कर दे, हम सब बंद हो जाए, तो इसीलिए .in को प्रमोट करना है। तो दे सेड कि जो सैटेलाइट वाला एयरनेट वाला काम कर रहा है, या फिर निक्सी जो काम कर रहा है, दैट इज कंसिडर्ड जीपीयू, और ये बहुत कम पैसे ले रहे हैं, 500-1000 रुपए इस तरह के पैसे ले रहे हैं। और एयरनेट को तो इट इज मोरली स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली, तो इन दैट केस दे आर डूइंग जीपीयू एक्टिविटी। पर इन रिलेशन जीएस1 काम क्या कर रहा है, बार कोडिंग। जब आप देखते हो तो दो यहाँ पे what the council has argued, they said that the GS1 एक बिजनेस पे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक सोसाइटी बनाई हुई है। पर दे सेड व्हेन दे एक्सप्लेन्ड इट, तो प्लीज नोट कर ले, उन्होंने समझाया कि भैया जब आप देखते हो कि दे आर टेकिंग ह्यूज अमाउंट, बहुत मोटा अमाउंट ले रहे हैं इनसे, देखिए 4000 20,000 GS1 इस से पैसे ले रहा है, तो ऐसे केस के अंदर देखिए इसकी बैलेंस शीट में फिगर भी दी है, 93 लाख, 44 लाख, 1,90,00,000 रुपए, समथिंग लाइक दिस। तो उन्होंने कहा सब्सिडी का अमाउंट बहुत बड़ा है, तो ऐसे केस के अंदर उन्होंने बोला प्लीज अप्रिशिएट करें सर, ये जीएस1 को सर बिजनेस में माना जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये बिजनेस और ट्रेड एक्टिविटी कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या ये पूरी कॉस्ट कवर कर रहा है, वो डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उसकी स्क्रूटनी के लिए जीएस1 को दोबारा इन्होंने वापसी असेसिंग ऑफिसर को नीचे भेज दिया। नाउ जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं वहां पे इन्होंने समझा, ये तो हमने ऑलरेडी समझ लिया, स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, ये अप्रिशिएट करें, ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का केस वहां पे था, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि देखो अगर आप बीसीसीआई का जब केस पढ़ते हैं, बीसीसीआई का केस देखते हैं, तो बीसीसीआई का कोई अपना कोई स्टेडियम नहीं है, दे आर बेसिकली डिपेंडिंग ऑन वेरियस स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जिनके अपने स्टेडियम है। और ऐसे केस में क्या होता है कि सर बीसीसीआई क्या करता है, ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से सर जो आपके टूर्नामेंट होने हैं उसके हिसाब से वो नेगोशिएट करता है बीसीसीआई, और जब जहां पे होता है 70% वो रेवेन्यू उसको दे देता है, उस पर्टिकुलर एसोसिएशन को दे देता है। और प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, यहाँ पे इन्होंने बोला कि सर 2001 में बीसीसीआई ने भी बोल दिया है कि भैया ये तो सही मायने में कैपिटल ग्रांट मानी जाएगी, राइट, कॉर्पस फंड है ये, सही मायने में हम स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को दे रहे हैं। तो इस केस के अंदर बकायदा इन्होंने पूरी शुगर को भी समझाया, जहां पे उन्होंने बोला भैया जब आप पूरी शुगर की जजमेंट पढ़ते हैं या फिर कोई भी जजमेंट पढ़ते हैं इन रिलेशन टू दैट पर्टिकुलर सब्सिडी, दे सेड कि नॉट ओनली आपको पैसे उस काम के लिए मिलने चाहिए, पर यूटिलाइज भी वहां पे होने चाहिए। पर मान लीजिए अगर कोई चीज यूटिलाइज, आपको पैसे तो उस काम के लिए मिले लेकिन यूटिलाइज आपने कैपिटल फील्ड में नहीं की है, तो ऐसे केस में वो सब्सिडी टैक्सेबल हो जाएगी। दे सेड बीसीसीआई पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज बीसीसीआई बिजनेस कर रहा है,
जो रेवेन्यू वो इनको दे रहा है वो खर्चा मिल जाएगा। उन्होंने बोला भैया अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब आप कोई बंदा बोलेगा कि भैया ये तो सही मायने में एजुकेशन है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, उन्होंने बोला जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं इट इज नथिंग बट इन द नेचर ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस ओनली। इन दैट केस तो उन्होंने सौराष्ट्र के लिए बोला भैया ऐसे केस के अंदर आपको चेक करना पड़ेगा आप कैसे कैसे एक्टिविटी कर रहे हो, क्या है, अगर आपको कैपिटल ग्रांट मिली है तो कैपिटल ग्रांट क्या आपने सर कैपिटल उसके लिए यूज करी नहीं करी है, इस बात के लिए उन्होंने केस को वापसी भेज दिया है। अब यही मैंने आपको एजुकेशन के लिए समझाया था। They said that is not the sense with the word education is used 15. Word education connote that what clause is purpose of training, developing the knowledge, skill, mind, character of students by formal schooling. Therefore, there is no doubt that the claim of the present sport association will not fall with this education and will have to examine with the 4th limb to 15. GPT it has to make case for tax exemption. Now, the last स्पोर्ट एसोसिएशन मैंने ऑलरेडी समझा दिया। हाँ, अब एक ट्रस्ट की बात करते हैं। सर 2 ट्रस्ट थी, एक ट्रिब्यून ट्रस्ट और एक बालाजी समाज। बालाजी समाज में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं दैट दो दिस केस एसएलपी वाज टर्न टू सिविल अपील, बट हैविंग सेड दैट उन्होंने जो हाई कोर्ट ने रेशियो लेट डाउन किया वो तो एक्सेप्ट नहीं किया, बट दे सेड दैट वी आर नॉट इंटरफियरिंग बिकॉज द टैक्स इफेक्ट इज लो। बट हैविंग टॉक अबाउट ट्रिब्यून ट्रस्ट, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। ट्रिब्यून ट्रस्ट पे सर क्वेश्चन क्या था, व्हाट अरविंद दत्तार साहब हैज आर्ग्यूड, अरविंद दत्तार साहब सेड दैट कि भैया ये देखो ट्रस्ट क्रिएट की है, अखबार का जो पूरी कॉस्ट है वो 12 रुपए है, पर ऐसे केस के अंदर हम जो पैसे ले रहे हैं हम तो 2 रुपए में अखबार बेच रहे हैं, तो हमारा टारगेट क्या है कि वो 10 रुपए कहां से पूरे होंगे, वो एडवर्टाइजमेंट से पूरे होंगे। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि भैया आप पैसे कहां से पूरे हो मैटर नहीं, लेकिन जब आप एडवर्टाइजमेंट छाप रहे हो इट इज नथिंग बट अ बिजनेस। तो ऐसे केस के अंदर सर आपके केस के अंदर ये 20% वाली कंडीशन आप चेक कर ले, अगर नहीं हो रही है तो ऐसे केस में ये ट्रेड और बिजनेस में फॉल कर जाएगा। नाउ बालाजी सवेज में समझा दिया आपको। नाउ प्राइवेट ट्रस्ट एप्रिशिएट करें, ये लास्ट है, देन आई विल गो सॉरी। अच्छा, बालाजी सवेज का समिति मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर दे सेड so far as the tribunal trust is considered that despite advancing general public utility the trust cannot benefit from exemption offered to 15 as the record reveals that income received from advertisement constitute business and commercial receipts. Consequently, the time limit prescribed in provision 215 has to be adhered for the trust claim being a charity eligible for exemption to succeed. Therefore, despite differing reasoning, this court has held that the implied judgment of High Court does not call for interference. और यहाँ पे मैंने बोला कि भैया low tax limit है. Last, not the least, so one main argument which was taken up by Arvind Datta, they said, they said in paragraph 88, they said that it was also submitted that to section 215 applies only to the last limb, that is advancement of object of general public utility, and not to the preceding limb, education. And in respect of charity, there is no discriminatory difference between the two. Since there is no intangible differentiation and racial nexus in this regard, that this discrimination offends Article 14. उन्होंने बोला आर्टिकल 14 के अंदर सही मायने में इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन। प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। सर रेवेन्यू ने आर्ग्यू किया, रेवेन्यू ने बोला कि सर रेवेन्यू फर्दर सबमिटेड दैट ये रीजॉइंटर जब दिया था दैट द वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट टू बी टेस्टेड स्पेशली इन द केस ऑफ एक्सक्लूजन और एग्जम्पशन लिमिटेड टू, सर इट शुड नॉट बी लिमिटेड, जो इनवैलिडिटी आर्बिट्रेरीनेस की बात है, बिकॉज सर ऐसा कोई ग्राउंड पहले कभी इन्होंने लिया ही नहीं था। व्हाट आई वांट टू से सर व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर आपको कभी हम बात करते हैं तो इट इज हमेशा कोई नोटिस की बात करें या किसी चीज की बात भी करें, हमेशा ये बोले कि दिस अमेंडमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशन नॉट वैलिड। हैविंग सेड दैट, तब ऐसे केस में आपने सारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, अब वो कैसे वैलिड नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे तो उस ग्राउंड को लेना आपको आसान हो जाएगा। दैट्स द थिंग। ओवर टू यू भैया। थैंक यू नितिन भाई। मतलब जब भी आपको सुनते हैं ऐसा लगता है कि एक्चुअली बहुत टाइम देना चाहिए। नहीं एक्चुअली भैया जजमेंट में इतना कुछ लिखा हुआ है, यू मतलब आप सब कुछ कर ही सकते हैं बस आपसे। आई फेयरली एग्री आफ्टर लिसनिंग टू यू एंड जब मैंने आपको इंटरव्यू करा, आपको टाइम लिमिट्स डिफाइन करी, तब से मुझे लगा कि एक शताब्दी चल रही है शायद। आई एम नॉट बी डूइंग दी आई एम डूइंग समथिंग अनफेयर। नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम की गरिमा को समझना चाहिए। वी हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम। I think very well. Let's have a big round of applause for Nitin Bhai for covering the entire judgment so quickly. I'm sure you know what I understand after going through the same, that yes, we need to devote time to the each question with Nitin ji framed in the beginning, and we need to have discussion on each question separately, and we need to appreciate those each question separately.
I think Abhi publicly the focus of the audience or of the professional is on that part of charitable, whether it needs to be on cost to cost, it can be with cost plus markup, but the judgment is beyond that. So before reaching to on a cost plus, yeah, on interpreting the word charity, the judgment is on much more wider issues. Now, let me call upon Advocate and CA Gaurav Gupta ji to share his thought on the key issues highlighted in this judgment. And Gaurav bhai, over to you. So my request is, Nitin bhai has covered a lot of aspects. If we can have more discussion on, these two words, one is the charity and second is the pricing. And I would like to share one example. Let's say I'm running a trust, charitable trust, or a charitable body, and I'm collecting the revenue to build up the buildings, to build up the school buildings where I can accommodate more students. And I cannot always rely upon the fund which will public will give me or government will give me. I need to collect that fund from the fees. And this question may be running to the lot of to lot of trustees after reading the judgment. If we want to develop, if we want to have more schools, then we need to have money, and that money will come from the students. So should we start charging upon cost to cost, and what could be the markup? Would it be seen as business? Now, all those issues could be there. Am I correct, Atul ji, Sushil ji, all senior members, Rajendra ji? So over to you, Gaurav bhai. Thank you, Gaurav ji. See, Nitin bhai has actually, I was when we were going through that PPT, new thoughts still keeps on coming to your mind, even though you have read those judgments twice. But then you again see those particular paragraphs, you learn. So my first thought is that this particular judgment of Honorable Supreme Court, there are two judgments. First of all, what they are all about. Number one of the judgment is trying to decipher the word GPU within the periphery of section 2 subsection 15 of the Income Tax Act. And the second one is trying to decipher the application of 1023C subclause 6. So these are the two main questions which Honorable Supreme Court has dwelled upon. So first upon the GPU. Now GPU starts with the word charity. We all understand. GPU is very, very wide. No one can give it a perfect connotation, give it a perfect meaning. Cannot put it into one small rectangle. Okay, these are GPUs, 1, 2, 3, 4, 5. No one can do it. So the Honorable Supreme Court also divided the entire matter between certain bodies. So what were the different, different parts or different bodies which were discussed? First of all, the Honorable Supreme Court discussed on the general test. What exactly is GPU? So that has been told by Honorable Supreme Court. Then it talked about 6 categories of bodies. Number 1, authorities, corporation bodies which were established by the statute. Number 2, statutory regulators like ICI. Number 3, trade promotional bodies. Number 4, non-statutory bodies. Number 5, sports association. And last but not the least, which hits the common man, the private trust. So they start with the general test. They dwelled upon these 6 categories of people. And if you look into the different discussion, let me very quickly look into the general test first. See, charity has not been a new word. Charity means when you are benefiting others rather than your oneself. So you're going beyond oneself. Your spirit is to benefit other. Now, this is something which has already been held by Honorable Supreme Court long back in the case of Andhra Chamber of Commerce, 55 ITR 722. The test always remains, are you trying to run for others or are you running for yourself? One line. Second, now, once you are running for yourself, you come within the ambit of business, trade, commerce. If you're running for others, you will definitely fall within the ambit of charity. Now, general public purpose, general public utility, the ambit has to be very wide. It has to benefit
people beyond a particular class, because the word used is public. So the word masses also somewhere gets into, it's embedded within this particular word automatically. Now there was the dilemma when they were talking about 215 general public utility. Can I run other activities also? I am a trust, I am having a primary activity. Can I run some ancillary activity? Now the Honorable Supreme Court laid down the general test. What ancillary activity and to what extent? Numbers are nothing. But are you actually taking those incidental activity as incidental, or have they become completely independent activities in themselves? If they have become completely independent activities in themselves, they will lose the characteristic, they will lose the benefit of being incidental and definitely the exemption. So 215, when they are interpreting the word GPU, the Honorable Supreme Court has given a very clear guideline that you have to remain charitable, you have to remain within the periphery of the very general thought that you are working for the masses and not classes. That's a word which I used in the beginning. If you look into the second judgment, which is primarily around 1023C6, here I was very surprised to see, because when you read section 10, income which does not form part of the total income. Now, section 10 starts with it computing the total income of a previous year of any person. Any income falling within any of the following clauses shall not be included. So it is a sort of an exclusion from your income. That is the beginning line of section 10. Then you come to 23C. I'm just linking it again. In computing the total income, the following income shall not be included. 23C says, any income received by any person on behalf of. It is not saying of, it is saying on behalf of. And then you come down to clause 6. Any university or any public institution existing solely for educational purpose and not for the purpose of profit other than those mentioned in subclause 3B, 3AB or subclause 3AD, and which may be approved by the principal commissioner or commissioner as a case. Now, my dear sir, this entire scheme of exclusion has to be read together. It has to be excluded, received on behalf of, and the third one, 6 talks about the class of people whose income has to be looked into. The sole test which Honorable Supreme Court laid down was on 3 aspects. Number 1, the emphasis on the word solely. Since the subclause 6 uses the word solely, so your purpose should be solely exclusively. It should not be having multiple purpose, and one of the purposes is education. Number 2, you have to consider the memorandum or the basic document or the rules and regulation of that particular body when you are trying to derive or arrive at the conclusion whether it is solely for the purpose of education or not. And number 3, very important, the registration under the state acts in terms of charities was looked in very seriously by Honorable Supreme Court, and it was not seen as if you are not even registered with that, that will not hinder your income tax exemption. No, sir. It has to be read in tandem. It has to be read together, because if you are charitable for the purpose of the State Act, you are definitely charitable for the purpose of the Income Tax Act. But if you fail so in the State Act, that will have an impact on your income tax exemption as well. 3 conditions. Educational institution must be in the business, must render education. Now, the word education, already Nitin Bhai has gone into it. The only decision which I love to refer to always, Honorable Supreme Court, sole trustee, Lok Shikshana Trust. That is the judgment to understand this word education. Education is very wide. It is not limited to the curriculum. It is very wide, but it is also not open-ended. We both have to understand this particular thing. Number 2, the education must be imparted, and that should be the sole motive of that particular institution. That is the second thing which you have to keep in mind.
And third, no profit. Now, when you're talking about no profit, the Honorable Supreme Court has not laid down what is profit, what is the margins, or what are the limits of profit. It has to be read on a case-to-case basis. It has to be very, very subjective. But at the end of the day, a person, as Nitinji pointed out, the differential between GS1 and the other bodies, it is derived from the very functioning, very nature, very behavior of the body which is undertaking the activity and the kind of fees it is charging for it. So there can be an advocate society which is taking up cases, and it is taking up cases, let's say for 1,000 rupee per litigant per case. Now that's a very charitable kind of a fees which you are taking. But suppose that particular society start taking up cases at 1 lakh, 1 crore. Now, in no manner this can be called as a charitable society. So it is a very subjective term, in my humble opinion. Nowhere the Honorable Supreme Court, in both the decisions, has tried to take away your exemption. Let me be, I would say, I'm very humbly reading the two decisions, and I'm very humbly speaking. It is not trying to take away the exemptions available to you. It is trying to shove off the people who, in the garb of charity, are running businesses, and the Honorable Supreme Court is trying to hit at them directly or indirectly, as you say. Those particular people should be taken out from the benefits of the charitable trust, charitable societies under the Income Tax Act, and those particular persons should be made taxable under the Income Tax Act. That's a whole purpose. So I would read out the last on page 146, para H. At the cost of repetition, it may be noted that the conclusion arrived at by way of this judgment neither precludes any of the assessee, whether statutory or non-statutory, advancing objects of general public utility from claiming exemption, nor the taxing authorities from denying exemption in the future if the receipts of the relevant year exceeds the quantitative limit. Now, those quantitative limits have been provided as whatever, they have been reducing or increasing over the period of time. The assessing authorities must on a yearly basis scrutinize the records. So please understand, the Honorable Supreme Court has already given you one thing in your favor. It is not an absolute decision of the authority that this trust is not a charitable trust. It will go on a year-on-year basis. The decision will have to be taken on a yearly assessment year basis. So please, if previous year was in your favor, this will not mean that the subsequent years will automatically be your exemptions will be given to you, and the vice versa will also hold true. Continuing, sir. The assessing authority must on a yearly basis scrutinize the record to discern whether the nature of the assessee's activities amount to trade, commerce, or business based on its receipts and income, whether the amounts charged on cost basis or significantly higher. If it is found that they are in the nature of trade, commerce, or business, they must be examined whether the quantified limit, as amended from time to time in the proviso 215, has been breached, and thus entitling them to the exemption. So, my dear sir, the Honorable Supreme Court has not taken away any benefit. It has rather on a year by year protected the assessee. If your previous year exemption has been denied to you, this is the paragraph you need to quote, that for the subsequent year, the assessing officer should not look into the disentitlement of the previous year. It has to be seen independently. And as a consultant, when you are advising your client, you have to now rework in terms of making them understand that, sir, if you are primarily running an institution, that will not entitle you to an absolute exemption under the Act. So your purpose, your goals, what you have achieved, should be in tandem, should be synchronized. And if they are not, then in that particular year, your entitlement will definitely be questioned and will definitely be put to test by the assessing officer. After this particular decision, yes, in my humble opinion, a lot of cases will be taken up by the authorities very
soon. I don't know what will be the timelines, what will be the guidelines. But my sole belief is the board will issue certain guidelines that under the this particular decision, these are the guidelines, how the cases should be taken up. It should not be that random each and every case or randomly cases are taken. There has to be some systematic methodology of previous year cases being taken up by the authorities, which we will definitely see soon. Nitinji wants to add something on this, brother. Yeah, एक दो चीजें जो लोगों में ना कंफ्यूजन जो नॉर्मली रहता है वो एक बार आप अंडरस्टैंड कर ले, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एप्लीकेशन। जब हम चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करते हैं, राइट, गौरव भैया ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि जो आपका एच नंबर है, जो लास्ट पेज, ऑलमोस्ट लास्ट पेज ही है, 146 147 पेज जो था, जहाँ पे उन्होंने समझाया कि ईयर टू ईयर बेसिस पे देखना है। तो व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस अ डिफरेंशियल हैज टू बी नोटेड डाउन फॉर एक्सपेंडिचर एंड एप्लीकेशन। व्हाई इट इज सो कि मान लीजिए अगर एक साल में एग्जामिशन खत्म हो गई, the only thing is what you are getting to have a deduction is of expenditure, not of application. Let me give an example. Say आज गौरव गुप्ता जी बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं और he is doing wonderfully well. इन्होंने 4 एडवोकेट रख लिए, नीचे 4 सीए रख लिए, 4 प्रोफेशनल रख लिए, तो जो पैसे उनको दे रहे हैं दैट इज बेसिकली एक्सपेंडिचर। मान लीजिए वो घर पे 2 लाख रुपए देते हैं, घर पे 2 लाख रुपए भाभी को देते हैं और भाभी 2 लाख रुपए घर का एक्सपेंडिचर करती है, मान लो बच्चों को स्कूल में लेके जाना, स्कूल में भेजना, कहीं पे घूमना है फिरना है, तो दैट इज एप्लीकेशन। तो व्हाट आई वांट टू से, जब बिजनेस की बात करते हैं तो डिडक्शन आपको सिर्फ एक्सपेंडिचर की मिलती है, नॉट ऑफ एप्लीकेशन। वेराज जब आप सेक्शन 11, 12, 13 की बात करते हैं तो नॉट ओनली आपको एक्सपेंडिचर की मिलेगी पर साथ के साथ आपको एप्लीकेशन ऑफ इनकम भी मिलती है। इसलिए आप देखते हो कि जब आप कोई एसेट परचेज कर लेते हो, इट इज टर्म्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। आप कोई चीज, नई चीज खरीदते हो, दैट इज टर्म्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो व्हाट आई वांट टू से, वन शुड नोट द डिफरेंशिया। और व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग कि आप ये बात एक और दिमाग में बैठा ले कि लेट अस से कि मान लीजिए पिछले सालों में भी कोई एग्जाम्पशन अगर हट गई होगी आपकी, तो बहुत लोगों का व्यू पहले ये है कि भैया ये तो ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेशन हो जाएगा। आंसर इज नो, एम्फैटिक नो। व्हाई इट इज सो, अगर मान लीजिए आपका कोई एग्जाम्पशन उड़ गया है, मान लीजिए, तो एक्सपेंडिचर तो मिलेगा ही मिलेगा। जो टैक्सेशन होता है वो सिर्फ इनकम का होता है, रिसिप्ट्स का टैक्सेशन नहीं होता। तो व्हाट आई वांट टू से कि व्हाइल यू कैलकुलेट पर्टिकुलर रिसिप्ट्स, तो आपको रिलेटेड एक्सपेंडिचर होगा, उसको उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। मैंने आपको समझाया एग्जांपल लेके कि एक्सपेंडिचर का मतलब उस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा कर रहे हो, उस इनकम के आने के बाद जो खर्चा कर रहे हो, दैट इज नॉट एक्सपेंडिचर, दैट इज एप्लीकेशन, राइट। पर उस इनकम को कमाने के लिए अगर कुछ कर रहे हो, दैट इज एक्सपेंडिचर, वो जरूर आपको मिल जाएगा। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू नितिन जी। आई थिंक हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू फॉर, मतलब एक भाई ने जजमेंट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, गौरव जी ने क्रक्स हमें समझा दिया उन जजमेंट में क्या की इश्यूज। आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन दैट वी हैव। Now let's go to the questions from public, if both of you allow. I think let's have few questions. So one question is coming from Atul Bajaj ji. He is asking, if trust has 2 schools, one school is in losses and other school is earning abnormal income, which help in subsidizing loss-making school, where the school earning more will be in nature of trade or business. So let's have view of Gaurav bhai first on this. Gaurav bhai, now we have 2 units. One unit is in substantial profit, the other unit is in losses, and both the unit are under the same trust. What is your view? See, again, this is where the Honorable Supreme Court, in the case of New Noble Educational Society, has hit. And just to replicate the understanding what Honorable Supreme Court says, number 1, the predominant object test was evolved for the first time in the case of Surat Art. You all know. They have, in the case of Surat Art, they have not tested, they have not rendered the context of educational institution where the word solely was need to be tested. Now this came to test in this particular case, and therefore Surat Art was held to be not applicable in this particular educational institution cases. So your predominant intent of education or predominant object of education will not per se make you eligible for 1023C. It has to be solely educational. Now the application of the predominant object test was clearly inept in the case of charities which are set up for advancing education. And therefore it was important to highlight
that this aspect of predominant object is inapt in the case of educational institutions. So in these particular cases, you have to see very clearly that the institution should exist solely for educational purpose and not for the purpose of for profit. Now, these are very sensitive words. When you look into the second school, which have been set up, you have to very clearly satisfy that the object was not profit. When you are earning so exorbitant profits amounts out of that particular school, if there is a legitimate reason for that, there may be a yearly kind of a one-time kind of an income, or maybe some certain donations. We need to go exactly into the nature of how that particular huge profit has been earned by the second school. If it is a regular feature that this particular school is set up for education and also for earning profit, huge profit. I'm only taking students with fees who can afford the fees of not less than 30,000 per month. It is not only merely for the purpose of education, it is also for the purpose of making profit. Now, you cannot tell me that, sir, my cost was 29,500 and 500 is what I'm making profit. No, he is very clear in his question that the second school is earning huge income and that is trying to subsidize the loss. So that is again where I'll go to Nitin Bhai. This is an application. So object, earnings, giving education, earning profits. Application of those particular profits, charitable. So that will not make the body per se charitable. So if today a chartered accountant or an advocate earning huge profit starts giving entire increment to charity, that will not make his profession a charitable profession, general public utility. So that is where I think Nitin ji has very beautifully differentiated between expenditure and application. So the second school application is charitable, but not the purpose or the sole objective of its existence. The first one, which is running into losses, I would say, again, I will not give it a plain yes, yes, it is charitable. Again, we have to look into what are the reasons of its losses. Maybe there is a huge capital expenditure which might have been incurred in that particular year, but it falls within the same bracket of the second school. So for that particular year, a special item might have come into its profit and loss account. That will not make it a charitable one. So please try to differentiate between the three things: the object, where the Honorable Supreme Court solely for educational purpose and not for profit. Number two, the expenditure. And number three, the application of your income. That is where I conclude. Very correct. I think I agree on this point that instead of just seeing, whether it's loss or profit, I think one needs to dwell into the reason for the losses or reason for profit. And then probably one would be able to conclude whether the activity is within the premises of charitable or general purpose utility or not. Now, my next question is to Nitin Bhai. This we have received on YouTube. Question to you, Nitin Bhai. Cost to cost includes capital expenditure as well? Question mark. Though income and expenditure account shows income, but after reducing capital expenditure, marginal is nominal. So this was the question. सर आप देखो भाई, आप देखो सही मैंने में यहाँ पे आप सीए माइंड जरूर लगाओगे, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा. आई विल नॉट पुट इट लाइक दिस कि आप एडवोकेट माइंड लगाओगे तो हर बंदा बोलेगा कि यार देखो एक्सपेंडिचर भी किसी कर रहे हो तो काम हो जाएगा. यहाँ पे आपको सीए माइंड लगाना पड़ेगा. व्हाट आई वांट टू से, व्हेन यू पुट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, you have to see कि what is the depreciation rate, why it is say, why जब आप ये बात कर रहे हैं तो you have to read in between the words. See, अगर कोई चीज enduring benefit दे रहा है तो आपकी कॉस्ट उसकी आप पर्टिकुलर लाइफ तक कवर करोगे, राइट? तो one should not say like this कि भैया आज कैपिटल एक्सपेंडिचर में कर रहा हूँ, it is meant for the business purpose, तो उसको भी कैलकुलेट कर लूंगा. तो आप बोलोगे भाई एक और खर्चा कर दूंगा, will not work. So what I want to say, you have to make a बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ेगा जहां पे आप वीर एंड टीयर निकाले. वीर एंड टीयर का मतलब जहां पे आप इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करें, डिप्रेशन डालें, उससे कैलकुलेट करें कि आपका जो कॉस्ट कितना आ रहा है. जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, गौरव भैया ने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है आप बोल सकते कि मैंने 30,000 रुपए महीने के हिसाब से 29,500 का तो मेरा खर्चा ही है किसी स्कूल के अंदर, तो वो प्रॉफिट ले रहा है. दिस नॉट वर्क. व्हाट आई वांट टू से कि इन टोटो मोटा मोटा नॉर्मली स्कूल्स कैसे चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है आप कल को बोलेगे जी मैं तो अपने
जो टीचर्स को सैलरी दे रहा हूँ 4 लाख रुपए महीने के हिसाब से, उससे कोई कम का कोई पर टीचर ही नहीं है, तो ऑब्वियस बात है, इट इज द पर्पस ऑफ प्रॉफिट मोटिव ओनली. नाउ देन हैविंग सेड दैट, अप्रिशिएट, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, मेरा पर्सनल मानना है यहाँ पे आपको नॉर्मल वीर एंड टीयर देख के कि आपकी कॉस्ट क्या बन रही है. एक चीज जो ऐड में करूंगा गौरव भैया में, दो व्हाट ही सेड इज वेरी मच करेक्ट, यू हैव टू रीड फैक्ट्स, पर हैविंग सेड दैट, अगर ये प्योर वनीला केस है, अगर बजाज साहब का प्योर वनीला केस है कि एक पे लॉस आ रहा है कि भैया ठीक है, वो मैं सैलरी दे रहा हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और वो सब्सिडाइज करके पढ़ा रहा हूँ, तो उससे मेरे को नुकसान हो रहा है, और एक में मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ. जो भैया ने 2-4 एग्जांपल दिए कि डोनेशन आ रही है या फिर किसी में खर्चा इसलिए नुकसान इसलिए हो रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैं अगर वो प्योर वनीला केस है, ऐसा कुछ नहीं है, तो प्लीज नोट कर लें, जो पहली वाला स्कूल है वो बिजनेस की एक्टिविटी में नहीं आएगा, दूसरा वाला एक्टिविटी में आ जाएगा. तो व्हाट आई वांट टू से, सर ये वाला जीपीयू में कंसीडर होगा, इस वाले को आप 20% में देखेंगे. लेट अस से एग्जांपल, पॉसिबिलिटी हो सकती है एक स्कूल का खर्चा, आप एक स्कूल जो सब्सिडाइज है वहां तो आपने पढ़ा रहे हो मान लीजिए 10,000 बच्चे, पर वेराज जो प्रॉफिट वाला स्कूल है उसमें सिर्फ आप 500 बच्चे पढ़ा रहे हो या 400 बच्चे पढ़ा रहे हो. आर यू गेटिंग पॉइंट? इन दैट केस, और वहां पे प्रॉफिट ह्यूज है, आप समझो बात, तो ऐसे केस में वो 20% वाली कंडीशन आप चेक कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स. मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं आपको, ऐसा जरूरी हो नहीं सकता. और व्हाट आई वांट टू से, जो ये दूसरी एक्टिविटी है जिसका टारगेट आपका प्रॉफिट मोटिव है, उसको चेक करना है कि वो 20% वाली कंडीशन प्रोविजन में हिट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या वो 20% ऑफ द रिसीट्स पे काउंट हो पा रही है नहीं हो पा रही है, राइट सर? तो वेराज जो ये एक्टिविटी है जहां पे आप सर लॉस में काम कर रहे हैं या मार्जिनल सरप्लस पे काम कर रहे हैं, वो जीपीयू में कवर हो जाएगा, वो बिजनेस में कवर नहीं हो पाए. नितिन भाई, आपने पहले बोला था कि मैं अमीरों से या पीपल हु कैन अफोर्ड उसे लेके आई एम गिविंग बेनिफिट टू द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड, तो फिर ये दोनों बातें तो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी भाई. एक मिनट ले रहा हूं सर, एक मिनट ले रहा हूं. अमीरों वाला वर्ड मैंने वापसी ले लिया था, एक्सपर्ट मैंने कहा those who can well afford and you are taking from them and giving it to the people who cannot afford. तो अभी इस एग्जांपल जिन्होंने एक स्कूल में पैसे बन रहे हैं एक में नहीं बन रहे, तो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी बात. Sir, very simply, Robin Hoods are not charitable. That is what we would put it like this. सर आप मान लो आज की डेट में कोई बच्चे को अमेठी में पढ़ा रहे हो या फिर कुछ ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हो, स्टेप बाय स्टेप में पढ़ा रहे हो, या फिर बाकी कोई भी प्राइवेट स्कूल जो आज की डेट में काम कर रहे हैं. Nitin bhai, let me put a caveat on your behalf. No names of any institutions. I'm sorry. Yes. Particularly. हाँ, मैं कह रहा हूँ इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे, अब आप देखो लॉ करने वाला तो आज की डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी कर रहा है, लॉ करने वाला किसी और से भी, और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से कर रहा है जहाँ पे जो फीस वो ले रहा है 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए साल की ले रहा है, तो कैन यू मैच इट? द आंसर इज नो. मेरा पर्सनल मानना है ये. सर नथिंग विद, am I audible? हाँ सर, हाँ जी प्लीज. So my question was कि in one school, our school, it has become famous, so like we are earning. In another school, it is not that much famous, so we are incurring loss. So the school where we are earning more profit, we are using that money in another school so that we can continue both the school together. बजाज साहब, मुझे तो ये उल्टा आपकी बातों से लग रहा है, दोनों के दोनों काम आप प्रॉफिट मोटिव पे ही कर रहे हो. इसका मतलब एक जो फेमस नहीं हुआ है वो स्कूल में अभी प्रॉफिट नहीं आया, और जिसमें आ गया दूसरे प्रॉफिट. दो अभी गौरव भैया ने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया था कि टारगेट है, आप खुद देखो व्हाट इज योर इंटेंशन, वेदर यू आर रनिंग समथिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव और नॉट. पर आपकी बातों से मुझे लग रहा है आप दोनों काम प्रॉफिट मोटिव से कर रहे हो, बस फर्क ये है एक स्कूल में भी प्रॉफिट नहीं आया, दूसरे स्कूल में प्रॉफिट आ गया. If you allow me, if I can move on to the next question, है ना, हम ज़्यादा specific हो जाएंगे तो you can contact the speakers directly. So we have a senior chartered accountant who has joined us from Rohtak. Sushil ji, if you can unmute yourself, sir, and ask your question. Yes, sir. Yes, Gaurav ji. Thank you. It is a very, very good webinar, and we have learned a lot from this webinar. So much learned persons are there with you, and we have gained a lot from that. Actually, I am auditing a institution that is Arya Pratinidhi Sabha. They are running schools also, and they are. गौरव भैया ने बहुत अच्छी बात बोली सर. गौरव भैया ने नाम मत लो सर, मैंने भी किसी नाम नहीं दिया. Institution के names. Because it is coming live on YouTube और on YouTube रहने वाला है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप institutions के नाम ना लें. Right. और अगर आप facts को ना discuss करें तो I would request it will be better, because there is something called client privileges. Sir, you take it offline with any of the speakers, sir. Please. Okay. तो सर का क्वेश्चन बेसिकली मैं सर आपके भी यहाँ पे बोल देता हूँ. मान लीजिए भाई थोड़ा सा भी अगर ये बड़ा होता है ना, the name of the institution is already there,
and the facts are will be detailed in this particular seminar. I would say it is in the benefit of the profession to refrain from this question. Okay. सर आप डायरेक्टली नितिन जी को या गौरव जी को कॉल कर लीजिएगा. Right, sir. हाँ वो ठीक रहेगा क्योंकि नाम ऑलरेडी हम डिस्क्लोज कर चुके हैं. Okay, okay. Right. Any other question अगर किसी और पार्टिसिपेंट का, if you have any question please raise your hands and request is do not name, crisp में fact रखें, अपने client का या उस entity का नाम ना लें. We will have 2 more questions and then we will close this session. Already we are 2 hours on this. Any notice arriving out from this particular seminar is to be blamed to Gaurav Garg ji. पर सर आप आई बिलीव मैं 1 मिनट ले रहा हूँ आपसे बस बिफोर कोई क्वेश्चन अराइव होगा. मेरे को खुद को लग रहा है कि आप सारे जजमेंट जब पढ़ोगे तो मेरे को लग रहा है दिस जजमेंट इज क्वाइट बेटर जजमेंट. और आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप जजमेंट पढ़ोगे यू विल कम टू नो कि बहुत सारी चीजें इन्होंने इस तरह से समझाई है. पहले हमें लगता था सब कुछ बिजनेस है. जैसे मैंने भी आपको स्कूल का एग्जांपल दिया, मैं बोल रहा हूँ प्योर वनीला केस है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं. तो मैं अभी बोल रहा हूँ पहला स्कूल जीपीयू में कवर हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा. शायद इस जजमेंट से पहले मुझसे पूछते तो बोलता यार ये तो बिजनेस के अंदर कवर होगा, दिक्कत नहीं आएगी. तो ये बहुत बड़ा डिलेमा होता था नॉर्मली. तो आई वांट टू से प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा. नाउ सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया. यस कुछ इश्यूज उन्होंने छोड़ दिए हैं फॉर गौरव गर्ग जी के लिए कि भैया एएलपी का मतलब क्या है, मतलब मार्जिन कितना लेना चाहिए, कितना आपको मार्जिन ठीक रहेगा, कितना मार्जिन ठीक नहीं रहेगा. तो शायद ये एक बहुत बड़े क्वेश्चन वैल्यूएशन इश्यूज अब ज्यादा क्रिएट होंगे कि कब आप मानोगे कि भैया ये कॉस्ट थोड़ा सा मार्जिन है, ये थोड़ा सा मार्कअप है, मार्कअप मतलब मार्जिनल है. कब आप यू आर टेंड टू बिकमिंग कमिंग इनटू प्रॉफिट, वांट टू कम इन प्रॉफिट मोटिव. ये बहुत बड़े क्वेश्चन अब शुरू हो जाएंगे शायद. Correct. But I feel apparently there is one big opportunity coming through. One point which I'm wanting to add is, please also appreciate that we are a evolving economy. We are a country of more than 135 crore of people, of which we have a majority of the people who are below poverty line, who are into emerging middle classes. So the affordability in our country is being questioned time and again by many. Number one. Number two, despite that, the government has also raised the bar. The quality of school education, the quality of infrastructure in the country, which is available to the general public. Now that can be from the basic sanitation to education to healthcare. Everything is getting improved. So the basic standards are also improving. Whenever you're presenting a case before an assessing authority, take the two together. So while the general public has to be considered, the raising standards of the country also has to be presented. Take them together and then read it with the Honorable Supreme Court judgment. Then take the reference of cost plus or no profits. That is how the case should be presented. An absolute case on either side will not help the assessee. But Gaurav ji, अब इस जजमेंट के बाद the department is going to say no, 20% से ऊपर है, profit motive है. सर उससे पहली बात है इंसिडेंटल नहीं है तो बहुत बड़ा Exactly. तो इंसिडेंटल वर्ड के ऊपर पहले आप फोकस करिए, फिर 20% की बात करिए. अच्छा एक चीज बताइए कि एक स्कूल की बहुत बड़ी प्ले ग्राउंड है और प्लस उनके पास लार्ज रूम्स हैं, तो अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT had asked them to hold some classes and some exams there, and for which they were paid. Basically, it was the IIT said it was to cover your cost of electricity and manpower. Secondly, the playground, they give it out for tournaments. Now, will it be a profit motive or it will be incidental? Just to add, there could be playgrounds, there could be auditoriums. You know, I have seen there could be shops in the school. वो हो सकता है banks को दे रहे हो एक area rent out कर रहे हो. Extension counter देते हैं वो. हाँ, banks, shops, playgrounds, auditorium, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. So what is in general your view? नितिन भाई, over to you. Yeah, देखो, as far as auditorium, playground is concerned, और आप अगर दे रहे हो तो please appreciate कि various judgment will say that अगर आप auditorium almost जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि you're not giving for on a very high price, right? तो almost आपको दिख रहा है auditorium manage करने के लिए या आपको playground manage करने के लिए जो आप fund इकट्ठे कर रहे हो, that is never termed as a trade or business, right? Never termed as a business.
whereas when you were giving something on rent, और आप जैसे आपने बोला एक्सटेंशन काउंटर दे दिया बैंक को, तो वहां पे दिक्कत आएगी भी, वहां पे दिक्कत आएगी। जहां पे आप ऑडिटोरियम को जगह दे देते हो, जैसे मान लीजिए इन द केस ऑफ एमसीआई इटसेल्फ, जहां पे ऑडिटोरियम के केस के अंदर मुझे आज जजमेंट अभी ध्यान नहीं आ रहा, वो जजमेंट में उन्होंने साफ बोला था अगर आप ऑडिटोरियम किराए पे दे रहे हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स नॉट अ बिग डील। यू वांट टू मैनेज योर फंड्स, आपका टारगेट है आपको ऑडिटोरियम मैनेज करना है, तो वहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। The issue would only arise when you are actually being charging enormously high, वो प्रॉफिट मोटिव वाला वर्ड आ जाएगा। और जो गौरव भैया ने बोला, जो बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ सर, जो आप इंसिडेंटल वाली बात जो भी कर रहे हैं, वो बात 20% में मैंने बोला आपको सर, पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जीपीयू में आती नहीं आती। सबसे बड़ी बात जो गौरव भैया ने बोला कि यू हैव टू पुट योर केस, या फिर आप असेसमेंट के टाइम पे डालोगे तो आपको सारी कंडीशन, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, पहले अंडर डेवलप्ड कंट्री थी, अब डेवलपिंग स्टेज है, अब स्टैंडर्ड्स बहुत बढ़ गए हैं, वो आपको पिच करने पड़ेंगे और साथ के साथ डालने पड़ेंगे, ये बताने के लिए कि सर ये जो स्टैंडर्ड्स है, या फिर हम जो आज की डेट में अच्छे कैरिकुलम की बात कर रहे हैं या फिर अच्छी सैलरी की बात कर रहे हैं, तो इट इज द नीड ऑफ द आवर, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आज की डेट में कोई स्टैंडर्ड अगर कोई अफोर्ड नहीं करता तो उसके लिए कम मिलेंगे और जो अफोर्ड कर रहा है उसको ज्यादा मिलेंगे। व्हाट आई वांट टू से, इट इज नॉट ओवर एंड अबव। जैसे मैंने गलती से 2-4 लोगों के नाम बोल दिए थे, तो वहां पे दिक्कत है, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, राइट। पर आज की डेट में जिस तरीके से स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो अगर आप उसको पिच करेंगे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जुड़े। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो नॉर्मली हम लोग गलती करते हैं while going for assessment, नॉर्मली हम असेसमेंट के टाइम पे ही ना सर केस लॉ डालना शुरू कर देते हैं, दैट इज वेरी बैड। सर ऑलवेज ट्राई टू फाइट ऑन योर फैक्ट्स, अपने फैक्ट्स को कोशिश ये करें केस लॉ जो आपके फेवर में है उसके साथ अपने फैक्ट्स को मैच करें, और जो केस लॉ आपके खिलाफ है उससे अपने फैक्ट्स को डिफरेंशिएट करते चले विदाउट कोटिंग एनी जजमेंट। अगर जजमेंट आपने करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट की करनी है, कहीं पे भी करनी है। अगर आप ऐसा कर लेंगे, व्हाई इट इज सो, अगर मान लीजिए असिस्टिंग ऑफिसर हेल्ड अदरवाइज या फिर वो कुछ भी बोलता है, तो ऐसे केस में आपको सीआईटीपी और आईटीएटी में हेल्प करना आसान हो जाएगा, बिकॉज आपने अपने फैक्ट्स ऑलरेडी बिल्डअप कर दिए हैं एट एओ लेवल, दैट इज द की। और आज की डेट में ये जो पर्टिकुलर लड़ाई है, चाहे मैं आपकी बात कर रहा हूं इन रिलेशन टू जो चैरिटेबल ट्रस्ट, ये फैक्ट बेस्ड लड़ाई ज्यादा है सर, नॉट ऑन लॉ टर्म्स। Thank you, Nitin bhai. Gaurav bhai, your quick closing comments for on this issue, and then I will after you I will speak for a minute. Over to you. I'll not take much of the time again. Just on the same question which has been just asked, sir, ऑडिटोरियम की आपने जो इनकम है इंसिडेंटल है, उस पे तो आप सबने डिस्कस कर लिया। उस ऑडिटोरियम का जो मेन पर्पस था जिसपे वो यूज हो रहा है, उसके बारे में किसी ने कुछ चर्चा नहीं करी, and there is where we miss. If you could have just put 2 lines on what exactly was the purpose for which that auditorium was being used, I think the incidentality and the purpose would have been served. So kindly please, my humble request would be, let's not focus on numbers. Again, the Honorable Supreme Court has reminded us that the purpose is more important than the numbers. First check the purpose, and then within those particular purposes, there is a periphery of profit which is allowed to be retained as a percentages. Those can be allowed to you. So that is how the scheme would work. The purpose, if it is lost and we are just circling around the numbers trying to put them into the ITRs, I think the questions we will not be able to answer them before the assessing authority. That's how I close, sir. Please. Correct, Gaurav bhai. Thanks a lot, Nitin ji. Thanks a lot, Gaurav Gupta ji. I'm receiving few questions, but we are running extremely out of time. We will be sharing PPT to all the participants. Certainly, Nitin bhai, I will request you to kindly share your PPT, and I will be happy to share it with all the participants. I personally feel, I think it's a big opportunity for all the professionals to review the existing work, existing flow dynamics, business flow dynamics, or charitable work, which your clients are doing. It should be a great review exercise for which one should charge from the client. It should not come freely. It should not go free to the clients. This session may be called as a charitable session, but from this charitable session, one needs to earn fees out of it. बहुत सारे ट्रस्ट हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं, और आप सब उनका कोई टैक्स ऑडिट कर रहा है, कोई ऑडिट कर रहा है, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बट आई थिंक ये टाइम है जब आप इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को लाइन बाय लाइन रीड करें, अपना फ्लो चार्ट तैयार करें, अपने Q&A तैयार करें, और क्लाइंट्स को एक हेल्थ चेक रिव्यू के लिए पिच करें।
क्योंकि गलती से अगर उसका बिजनेस में फॉल कर गया तो पहले तो वो आपको बोलेगा कि जैन साहब आपने मुझे बताया नहीं, दूसरा उसकी टैक्स एग्जम्पशन खत्म हो जाएगी। सो हम एक्स्ट्रा फी नहीं, बल्कि जो हम अपना एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करेंगे इन एडवाइजिंग द क्लाइंट, उसकी आप एक जेन्युइन फीस लें और क्लाइंट को भी सही दिशा और मार्ग दिखाएं। With these words, let me once again thanks all of you for attending today's session. Special thanks to Nitin ji and Gaurav Gupta ji for quickly reading this judgment. आपको पता ही है, जब मैंने सेशन अनाउंस किया उसके बाद त्योहार थे, घर का काम था, और नितिन भाई और गौरव भाई जनरली बिजी रहते हैं, तो जरूर घर में आंटी जी ने और भाभी ने पकड़ के इनसे घर की सफाई भी कराई होगी, उसके बाद भी इनको केस लॉ पढ़ने का टाइम मिला। So hats off to both of you for reading this huge judgments, drawing interpretation from it, and sharing it with all of us. Thanks. गौरव जी, एक चीज बोलूं मैं छोटी सी, मैंने भी जजमेंट पढ़ी थी और मैंने सोचा था कि मैंने सब कुछ समझ लिया, बट इन दोनों महानुभावों को सुनने के बाद मुझे पता लगा है कि मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आई थी। Actually, really very good interpretation. दोनों every ना एक दो चीजें मैं देखो, गौरव भैया तो इंटरप्रेट ऑफिस बात है, मतलब मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, हर क्वेरी की चाबी इनके पास होती है गौरव भैया। मैं आप जो मैंने करीबन 3-4 साल सीखा है, क्योंकि मैंने सीखा, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ना जो जिस्ट आता है, जो टेक्समेन में आया, चाहे वो, चलो फिर मैं सॉरी गलत बोल दिया, किसी भी जगह पे आए, तो हम नॉर्मली जिस्ट पढ़ते हैं, हम बोलते हैं यार कि ये हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया। The main ratio which is actually in between the lines, तो different पैरास में क्या बोला हुआ है, that is more important। तो वो अपने को समझना बहुत जरूरी है कि आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या फिर हाई कोर्ट, जो भी जजमेंट आप यूज करना चाहते हो, पहले ये देखिए कि उसमें लिखा क्या है, अंदर क्या पढ़ा है। हम गलती क्या करते हैं, सिर्फ जस्ट पढ़ते हैं, जो भी हमने सब्सक्राइब किया हुआ उसको कोई पर्टिकुलर पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करते हैं और बोलते हैं जजमेंट का रेशियो ये, दैट इज नॉट, वो आपको हेल्प करेगा नहीं, मेरे को और आपको। Thank you. लास्ट लाइन मैं बोल देता हूँ, जस्ट टू जो गौरव जी ने भी कहा, फॉर द बिजनेस ऑफ ऑल द प्रोफेशनल, just look into the trust and societies who are taking CSR and working on it. I'll close my line on this because here is where I have hit the soft spot for many. So please, sir, in the light of the Honorable Supreme Court, please look into those cases. थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जजमेंट तो पढ़े ही पढ़े, काम भी करें, बट थोड़ा अपनी हेल्थ को लेके भी रेगुलर रहें, वॉक करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, ताकि हम सब लंबे समय तक कुछ ना कुछ देश के लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। दिवाली चली गई है, बट टेक्निकली अमावस्या थोड़े 2-3 घंटे पहले खत्म हुई है। So wishing all of you a very happy and prosperous Diwali. Take care. Thanks.